IoT that are security concern. If we talk about the security concern, so we increase the connectivity in the system. Cybersecurity become critical concern to prevent data which is sabotage and unauthorized access. Because if we have to implement चैनल पे जाएं लिंक निकाल लाइव वाला it should begin with IoT and लाइव आ workers गया need शुक्र to be registered in IoT. So we have to think about our workers, our dealers, our distributors, our suppose we have drivers there, we have a labor there, so everyone should be registered there. So we have increased the chance of unauthorized access to some system. Now, the second main issue is interoperability that integrate the diverse industrial devices and systems from different vendors can be challenging because how we adopt our devices, we have to different types of machines and we have to follow the standard. Because if we increase the number of IoTs, so every person should be connected to the internet. So we increase the growth of smart devices, and these smart devices need to be handled and managed effectively because it will affect the industry. So most of the persons are not technology. They don't have a background of a computer science. So that is the main issues we look at in this factory. Security concern, interoperability, and security. What are the future words we can found in the industrial? There are a lot of words we can found in the future, but I would like to highlight here our major focus, that is major focus should. So the next thing is reliability and resilience. Industrial process often require high reliability and resilience in failure. Necessitating recognize IoT architecture and redundancy measures. So we don't focus on reliability and resilience against the failure. What will be happen after the failure? There is no network. So whole industry is not working here. Or the attacker attack on one main system. So whole industry will face the problem. The main and last important thing that I would like to highlight here, that is skill gap. While the adoption of IoT technology demand a skilled workforce capable of managing and operating the complex system, because we have a with the help of the IoT. So there is a need for training and education incentive because at that point the company owner don't go waste the time for workers training, and the workers don't want to go for the training because if they go for the training, so they did not get they don't get the leave or proper, because the IoT training at least about 3 months, 4 months for training the labor, because you have to learn about a new system. In that case, skill gap is major cause of adoption of IoT in our industries. So in this slide, we focus on our opportunities, some issues and challenges. Even though there are a lot of issues
you can see here. However, addressing the associated issues and challenges such as security, interoperability, security execution for successful IoT implementation. By overcoming these challenges, organization can unlock full potential in industry to drive transformative change and gain competitive edge in the digital area. Besides this, we are to focus on our employees' skills, and we have to develop some training program for improve and enhance the employees' skills. So thank you for all of you. If you have any questions, query, you can ask me now. Thank you very much, sir. Any question? No question? I will share the email address of the speaker. So if you have any question in smart industry, you can email it. Thank you very much, sir. Okay, students, now I'm going to invite the great scholar, the leader, and mentor of many students, Professor Dr. Rauf Azam. He is accomplished academic and researcher in the field of software engineering. He obtained his PhD in the area of reverse engineering from Technical University of Alzenau, Germany in 2011. Currently, he holds a position of associate professor at the Township University, Lahore campus. With over 22 years of teaching and research experience at engineering. His research interests include reverse engineering, design patterns, anti-patterns, recovery, program comprehension, and source code analysis. And he is talking us with today about application and challenges in reverse engineering. So let's give a very, very warm welcome to our speaker, Professor Dr. Rauf Azam. I'm heading there the software engineering research group. My research is on another topic of reverse engineering, and today the topic of the talk is on the background, the issues, the applications, and the research gaps that exist in the domain of reverse engineering. So the outline of my talk is on the definition, concepts, and the motivations. Because I know that many students will not be familiar with the basic concepts of reverse engineering,
related with the topic of reverse engineering, followed by the application, research gaps, and the research topics in the area of reverse engineering, and then is the summary and the conclusion. So let me start with the fundamental and the basic definition of reverse engineering, because when you will be familiar and understanding the definition, then you will be able to understand the later on concepts which are related with this topic. So the definition that was first of all given by the famous authors in 1990 is reverse engineering is the process of analyzing a subject system. The purpose is to identify the components of the system and their interrelationships. And the second aspect is to create the presentation of the system in another form or at a higher level of abstraction. So the goal is, you will be familiar with the concept of forward engineering. You know that in forward engineering, what the software developers or software engineers do, they start the development of the software starting from the requirements, they go towards the design, towards the development and the implementation. That is the cycle of forward engineering, and I hope all of you will be familiar with the concept of forward engineering. But in reverse engineering, as it's clear from the name, we start the first step from the source code, from the implementation. And we come back towards the design, towards the architectures, the requirements, and what was actually the business goal, what was the idea behind developing this software application. So that is the crux actually, and many European countries and Chinese are making the best use of reverse engineering to gain the competitive advantage, to get the benefits, to reduce the cost in the maintenance, and many others that I will be discussing in the later on slides. So the motivation is that reverse engineering and re-engineering, these are two essential activities in the life cycle of any software development product. Because you know that companies spend a lot of revenue, even billion and billion rupees on the the architecture, the design, the basic concepts that are used for the development of software applications. So reverse engineering and re-engineering can be important throughout the life cycle of any software product. And the second aspect is that today's stressful systems will become tomorrow's legacy systems. The systems that we are using nowadays, definitely they will become the legacies. And when you have to deal with the legacies and you have to use the knowledge of these legacy systems, the first prime step will be the application of reverse engineering. One thing that is a misconception with the academia and with the students, reverse engineering is not just generating the UML diagram. That is not the reverse engineering. This is just a one step. This is just the initial step towards the goal of reverse engineering. So it's not the whole story that extracting only UML is the reverse engineering. That can be done quickly within a few seconds. And the number of legacy systems are increasing with respect to time. The next is what are the disciplines that are related with the topic of reverse engineering. I already mentioned that it was earlier with the order engineering, reverse engineering, the definition. I shared the starting slides. What is re-engineering? What is refactoring?
what is redocumentation, and what is data re-engineering. So in the nutshell, all of these disciplines, these are the key disciplines in the area of reverse engineering. These disciplines are associated with the topic of reverse engineering. If you have to perform the re-engineering activities, the first step will be reverse engineering. If you have to go towards the refactoring, refactoring is one of the major research domains, and many researchers are working nowadays on the topic of refactoring. And when you have to go for the refactoring for improving the quality of the source code, the essential and the prime step will be the application of reverse engineering. And similarly, redocumentation is another discipline. Nowadays, the tools are available that you take the source code and you ask the tools to generate the documentation of the software system. The major problem is that sometimes the developers are making changes in the source code, but the documents are not updated, they are obsolete. The last field is data re-engineering. One is the source code re-engineering, and another one is the data re-engineering. Data re-engineering, the purpose of reverse engineering is actually to create the databases on the source code that are used in the previous application. So this slide is showing the relationship between the reverse engineering and forward engineering. You can see that in forward engineering we have the requirements, design, source code, and behavior. But in reverse engineering, we start from the behavior, come towards the source code, then design, and then finally we come towards the requirements. So, what are the applications of reverse engineering? That's important to know. The field of reverse engineering is used for the malware analysis. You will be familiar with the concept of malware analysis. Malware is actually a suspicious code that can harm your source code, your application. It's a kind of balance. It's a kind of balance. So if you are interested within the field of virus research or malware analysis, you need the knowledge of reverse engineering for that purpose. Similarly, identifying the reusable components. If you have to reuse the existing APIs from the already developed systems, again, you can use the knowledge of reverse engineering for that purpose. Software reusability. There are many legal studies, and it is evident from the results that many successful systems that are already developed, the developers can use their knowledge and can use 50 to 80% of their efforts by using the standard APIs that are already proven, that are already tested. So, if you have to reuse the existing APIs, the existing programs, the procedures, again, you need the knowledge of reverse engineering. Because, first of all, you will be knowing about the health of those APIs. Either they are appropriate to use in the new system. Similarly, the main topic for which we are working is the detection of design factors. That's the sub-area within the reverse engineering. I hope you will be familiar with the concept of design factors. These are the standard solutions, they are the proven solutions, they are the tested solutions, they are reusable, they are kind of recipes. Similarly, reverse engineering is used for the detection of anti-patterns. I will give you few examples of design patterns and anti-patterns on later on slides. Maintenance cost saving, quality improvement, migration to other software hardware platforms, determining the business rules at the highest level of abstraction from the source and to gain the competitive advantage. And I have given you already the example of Chinese. They are making the best use of reverse engineering in order to gain the competitive advantage.
of legacy applications. So what is a design pattern? The first book was written by Ganga Force. These are the 4 authors who have written the first book on the topic of design pattern. And the standard definition is that the design pattern offers guidelines on when, how, and why and implementation can be created to solve a general problem in a particular context. So this is the first definition and standard definition. Anybody who start research on the topic of design pattern is always citing this book of these 4 guys in their course. And it is cited more than 50,000 times on the Google Scholar. That's a very famous book. The application of design pattern is used for interfaces, security, and services. And one of the key motivations for using pattern is that when you will be applying pattern for the development of software application, you will gain productivity increase of 25 to 40%. That's a major gain actually. And the last aspect on which we are working is on the recovery of design pattern on the source code of text application. So this committee is for software maintenance, re-implementation, reversal links, and so here is just one pattern. Just gives you the idea that what is actually the pattern. That's adapter pattern. And consisting of 3 classes. One is the target class, adapter class, and adaptive class, and associations and inheritance relationships between these classes. Actually, this pattern is practically used when you have to convert incompatible interfaces into a compatible interface. For example, you have a issue and you have to convert it, you have a socket with 2 issues and you have to convert it into a 3 issue. So adapter pattern can be used for that. This is just one example. Similarly, similar patterns, that is the basic patterns. The major challenge actually was in research was that Ganga 4 guys first of all gave the concept of only 23 design patterns. They were the standards. But now they are not 23. Now there are different implementation variants of these patterns, which are actually the challenge for the researchers. So if you look, this is the singleton and this is the simplest one. But we have discovered that this singleton has no more than 12 variants. And these variants are increasing with respect to time variance. So developers have their own style for the implementation of these patterns that become, actually they make the task of reverse engineer very hard for the discovery, for the recovery of these patterns from the source code of legacy application. Just to give you a look here, that's the similar feature. This is another feature with a variation. Another feature with a variation. Look at the source code. Some of the rules that we write it as a singleton, but this is inaccurate. This is inaccurate detection. That's a false positive actually. Similarly, there is a little bit change. This is recognized by the tool as a valid pattern, but it's a false positive, and this last was the correction. This is one of the techniques that we propose for the detection of design patterns and the research papers. We take the source code, Java, C, C#, plus application. We reverse engineer source code using Spark System Enterprise Architect tool. This is a very famous tool, and we use it as a plugin for the recovery of design patterns. We get the intermediate representation of the source code in the form of XML and in the form of databases. So we get intermediate representation, and then we use the multiple searching techniques, and these techniques are SQL queries. We have developed our own parsers for the extraction of design patterns from the source code. We have annotation analyzers, and the pattern definition, and finally the patterns are recognized. This is again the technical work, the references are mentioned, you can see the details.
Similarly, the other topics on which we are working are the anti-patterns. So let me tell you again the details. Design patterns, as I already mentioned, are the standard solution, are the proven solution. These are the best guidelines. Anti-patterns is clear from the name. These are actually the violations of standard object-oriented programming principles. When the developers or the software engineers have the deadline pressures, they go for the quick solution, they go for the patches in order to complete their task, and they violate actually the standard object-oriented programming principle. One of the key principles, maybe you are familiar with it, is the single responsibility principle. What this principle say actually? This principle clearly says that every object and class should have a single responsibility, a single task. That's the basic philosophy of actually object-oriented programming. So when you will be assigning many tasks to one class that is doing A, B, C, D, and Z, many tasks, it will definitely become complex. And the maintenance will be very difficult in the future. So what are the anti-patterns? Anti-pattern is any system that indicates something wrong, something bad means it's clear from the name. It's actually a hint that something has gone wrong, which may cause a problem that will harm and have the problem. The targets are frequent changes and enhancing violation of standard design according to the deadline pressure, as I already mentioned, and inexperience of the developers. When developers are not experienced, they are making the mistakes. This is just one simple example of one anti-pattern that is called anti-guard. As I already mentioned, that when you will be assigning multiple tasks, number of tasks to a single class, that class definitely will become the over complex, and it will be having many relationships with the other classes. When you will be making change in a single class, its impact will be on number of the classes. So if that change will be harmful to the other classes, definitely it will be having a serious impact on the other number of classes. So this is just a single example of a guard class. So what we do, we first of all detect that which are the guard classes in our source code. The first step is the detection, and then we go for the defect. In defecting, what we do, we remove that problem from the source code and convert this single class into a number of classes with the definition that every class should have only a single responsibility. This is one of the techniques that is developed by students, and the paper is already published in number of journal papers. As far as the detection and defecting of anti-patterns is concerned, we are doing extensive research work on this topic. I already supervised 3 PhD students who have published a number of research papers on this topic. Some of the papers are mentioned here. We started this research by detection of anti-pattern from object-oriented software applications. But now that trend is going towards the other domains. Now we move towards the Android applications, server-oriented applications, REST application having the RESTful services, and the application with use of IoT. So this is one of our research papers to take the definition of smell. Our tools have the particular smell, this is the technical area, you have the understanding for both sections. Again, we are using a smart system enterprise architect that the market is available freely, and I like it actually because it's a very lightweight and it supports actually reverse engineering of 14 plus programming languages. And if you compare it with
IBM national road. IBM national road is very costly, having cost of $2,000. But this tool, one can even buy $100 and doing all the work of IBM national road. So this is regarding the level of obstruction that occurs actually during the reverse engineering of source code implementation obstruction level. I already explained you that for reverse engineering, our starting point is actually the source. We always start from the source. In forward engineering, we first start from the requirements and go towards the implementation for the source. We always start from the implementation, then come towards the structures that design, then we come towards the functions, these are the requirements, and finally we come towards the business rule, that what was the business need for that application. This slide in the nutshell is showing the complete field of knowledge, that there are different methods, there are different techniques, and if you, when we just work in this research domain, one of the things that is important, everything that you will be building, you have to realize it with the help of a tool. So tool support is always necessary and important if you will be conducting research in the area of university. So the problems, what are the problems, what are the challenges, skills that need the attention of research community. One of the problems is that there is still a gap between the concrete and the abstract. That's important to understand. You know, source code. We always start from the source code. The source code is at a very concrete level, having a complete detailed information. And when you come toward the design, there is a huge gap of abstraction. Now we have to do that. How we can reduce that gap? And especially when we start from the code and come toward the business rule, that obstruction gap is increasing with the multiple factors. So this is still a challenge, and it requires the attention of research community. Having to do the code and design is still a gray area, and people are working on it. The global models are available, but obstruction gap is very high. Again, there are global models, but the obstruction gap is there between the global models and the source code. Extraction of the artifact from the incomplete source. This is another challenge. That if the reverse engineer is having the source code that is not executable, that has missing file, lost data, some of the tools, when you give input of incomplete source codes to these tools, they do nothing. You will be getting nothing. So it's a challenge that how to deal with the incomplete source code, which is not executable. This is another research challenge, and the abstraction of business rules from the source code. Again, I mentioned that manufacturing is very, very critical. It's the dream of reverse engineers that they can extract complete design, other important models from the source code. But frankly speaking, still there are many challenges. That is still not possible. That's for the attention of research. The method of use research was even in the university problem and the development area that should not be automated. Human reasoning should be always there. Human should be capable and able to give his input to the working or expecting a different kind of information. So these are the problem areas, these are the topics for research for the students, these are the topics on which we are working. Still we are working, already I mentioned that my three students have already completed the PhDs, and 22 master students have completed their master's degrees, and we have all of our publications of this code, of these code research topics. Researching of design patterns, as I already mentioned, that the challenge is actually design patterns at the start were very easy. Then of course, just listed very easy. But with respect to time, now these patterns have number
we are working on the detection of anti-patterns, related object-oriented, service-oriented, and we are also working on microservices. One of the students is working on detection of anti-patterns for microservices. Refactoring of anti-patterns, we publish one paper on this topic. I simply definition is software engineering, and there are only few papers from Pakistan in this journal, and acceptance rate is 0.005 in this journal. So this last challenge, that's actually a very big challenge again, is the eventually resourceful. You know, nowadays, when you look at the software application, they are developed using multiple programming languages. You have one language as an interface or backend, you have something different you are using. The other APIs which are developed in the other programming languages. So again, for the reverse engineering of these applications, the multi-level source code analysis is a very, very challenging topic. And still, there is not much more from that topic. So this is important for the students who are interested for research. We are working on multi-level source code analysis. And last is the detection of hardware, that is active research, that is the continuous race. You know, there are various and anti-engineers. That's competition. That competition will never end. It will always continue. And if you are interested for research, in modern analysis, you need the knowledge of university. That's all. Question, students? Not still. There are very few people in Pakistan who have research background in this. Frankly speaking, I first time introduced the subject of reverse engineering officially at undergrad and master level in the universities are not offering that course because still the resources are not with them. Any other question? Which security medium? Cyber security medium. As I already mentioned, is live for the model analysis, for the detection of pattern, live pattern. That's not different. That's your question. The first challenge and the first primary step is that you have to analyze the source code where that source is actually lying. And when we go for the analysis, the first step will be you have to understand the source code. And for understanding the source code, you have to perform the step of reverse engineering. Again, come to your questions. First of all, will be defining the type of threat, the definition of that threat. Then you will search that threat from the source code by parsing the source code, and source code will highlight the portion where that security threats will be lying. And after detection, then people have developed different refactoring tools which can remove or eliminate these anti-patterns, smells, or the security threats. Yesterday we were listening about artificial intelligence.
have used machine learning techniques for extraction of knowledge from the source code. So the basic thing is that you have to read the source code, you have to analyze the source code, and for that analysis, you have to give it a key question that what you want to extract, what you want to get from there. So AI techniques are already and they will be used in the future in the field of learning. टी टाइम मेरा ये सरकार क्वेश्चन था FYP बच्चे बहुत सारे जो है वो कर रहे होते हैं तो FYP में कैसे वो यूनिवर्सिटी को जो है वो यूज कर रहे हैं का बेसिक फिलॉसफी है वो बना हुआ है उसके नॉलेज को आपने यूज करना है, आपने जो है वो एक्सपेक्ट करना है। तो FYP के लिए वो बहुत सूट करता है कि कोई ऐप आप देखें जो पहले से ऐप जो है वो बनी हुई है और उसको रिवर्स इंजीनियर करें। और पहला स्टेप इसमें मेरा बेटा बहुत सारे टूल जो है वो अवेलेबल है, बहुत सारे टूल ऑलरेडी जो है वो अवेलेबल है जो आपको डिजाइन की पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सपेक्ट करके जो है वो दे देते हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने अपने जो है वो स्टार्ट करना था एग्जाम्पल किसी यूनिवर्सिटी का जो है वो LMS जो है वो बना हुआ है, पहले से जो है वो बना हुआ है। अब आप ऐसे एक चीज बनाना शुरू करेंगे तो आप कभी भी उसके साथ कम्पीट जो है वो नहीं कर सकते। तो पहले आप क्या करें एज एन FYP स्टूडेंट कि आप पहले से कोई बेस्ट एप्लीकेशन जो है वो बनी हुई है उसको रिवर्स इंजीनियर उसका बेस्ट नॉलेज जो है उसको रीयूज करें, उससे आपकी एफर्ट भी सेव होगी और अल्टीमेटली आपका टाइम भी जो है वो सेव होगा। जैसे मैंने कहा ये एम्पिरिकल एविडेंस है कि रीयूजेबिलिटी को अगर आप सही अंडरस्टैंड करके यूज करते हैं तो 50 से 60% आप अपने रिसोर्सेज और टाइम जो है उसको सेव जो है वो कर सकते हैं। बहुत सारे ओपन सोर्स सिस्टम, बहुत सारे फ्री जो है वो सॉफ्टवेयर जो है वो पड़े हैं, उनमें आप यूज करके अपने FYP की तरफ जो है वो आ सकते हैं। Thank you very much, sir. Now it's time for next speech. We have Dr. Rauf Azam with us. He's esteemed academic researcher in the field of data science. He's an associate professor at the Department of Data Science, Faculty of Computing and Information Technology, University of the Punjab, Lahore. He holds a PhD degree from KTH Royal Institute of Technology, Sweden, with a rich academic background. He has been associated with lean on research work with different universities, including in the Netherlands, Sweden, and UK. And today he is discussing us with about the Urdu language processing research in the era of LLM. So that is very informative talk for the students who have actually attended the lecture yesterday about LLM, that was large learning models. So let's give a warm welcome to our respected scholar and teacher, Dr. Rauf Azam.
how many few questions before we start? Most of you are undergraduate or graduate students. That will help me to customize my talk according to that. कितने लोग हैं जो undergrad student या graduate students हैं? Most of you? Yes. So with some excuse to my senior faculty members, one has an experts in their field. So you are my primary audience for this talk. कितने लोग ऐसे हैं who have taken a course on machine learning or AI? Very few. Okay. कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने chat GPT यूज किया है? आजकल तो असाइनमेंट बनती है chat GPT पे. So if you know these three things, you are able to understand this talk. But since most of you have not taken a course of machine learning, so I will try to give you a glimpse of how machine learning looks like and how does it work, and we'll go on from that. आप सब लोगों ने बचपन से tables याद किए हैं, 2 का table, 3 का, 4, 5, 10. Is that right? So please respond. So yes. टेबल कहाँ तक याद किए थे? Like the 3 का टेबल, 10 का, 12 का, 20 का, but yes. So 3 multiplied by 189. Learn a pattern. So you learn a pattern, and based on that pattern, you do the next task. So that is exactly what machine learning is. So we tell the machine some task, उसको कुछ थोड़ा सा बता देते हैं pattern. उसके बाद आने वाले सारे pattern, even if they are unknown, they can do it. Exactly the same way कि आपको टेबल 3 का 10 तक सिखाया गया था, right? So that is what machine learning is. So machine learning has 2 parts. One is we give it some training, and then based on that training, the machine do the next phases by itself. So that's what machine learning is in naive terms. So natural language processing is the topic, is a high-level term on which I am giving my talk. Natural language processing is a subfield of linguistics and artificial intelligence. So it actually concerns about how computer programs or how computers can understand text, so anything that you write in the form of text or anything that you speak in the form of, so the computers take that text or voice and then do some processing about it. That's called natural language processing. So natural language processing concerns how computers, how to program computers to understand the language and do some processing about it. So there are a number, if you look around, you have applications of natural language processing all around. आपके इर्द हर जगह natural language processing application है. Word के अंदर assignment बनाते हैं, spelling गलत टाइप कर देते हैं. The natural language processing a component spell checker that works there or tells you जनाब spelling गलत लिखे हैं, ठीक spelling ये. आजकल तो उससे ज़्यादा कितने लोग Grammarly यूज करते हैं? Yes. Why do you use it? Because एक sentence लिखा हुआ है उसकी grammar अच्छी नहीं है. So Grammarly tells you use the wrong grammar. Actually back end के ऊपर natural language processing, which is a combination of linguistics and AI, काम कर रही है, that helps you detect कि आपने grammar गलत लिखी. Then there is another concept of natural language processing, another task that's called text summarization. आप एक बहुत बड़ा टेक्स्ट को समझना चाहते हैं, बजाय वो पूरा टेक्स्ट समझने के आप नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को कहते हैं कि मुझे एक छोटी समरी जनरेट कर दो और यू टेल हाउ किस साइज की समरी चाहिए. आप पूरी बुक दे दें, कई बार पे एक समरी जनरेट कर दो. नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का भी प्ले. So similarly, questioning on you search things on Google, natural language processing comes into play. You ask questions from Google, natural language processing comes into play. Questioning answer systems are used. Chatbot, you talk to the chatbot, you chat with the computer systems, natural language processing comes into play. So ChatGPT से पहले भी chatbots available थे. So for example, Draz ने अपने chatbot build किया हुआ है. I used it long time ago.
can see, you can chat with the class, or class का आप chat करके अपने order को try कर सकते हैं. This is one of the screenshots of that. When I talk, so this was natural language processing. The subdomain of it is Urdu language processing. So if I do all of those tasks for Urdu, we call it as Urdu language processing. So it concerns about how computers can be programmed to understand and process Urdu text. So we do all the same tasks for Urdu. It includes Urdu spell checker, Urdu sentiment analysis, Urdu summarization, Urdu translation, all these things. So there is a complete whole field Urdu language processing for that. So actually, as of today, there are two eras of research. One is the pre-ChatGPT era, let me say, and one is the post-ChatGPT era, where now ChatGPT exists करता है, अब हमने research कैसे करनी है? So पहले किस तरह करते थे और अब किस तरह करते हैं? अब हमने किस तरह करनी है? So that's what my focus is about. So let's say this is the classical life cycle of research in the area of natural language processing. हम क्या करते हैं? सबसे पहले फर्स्ट पेज के अंदर we scrap text. सबसे पहले आप कोई भी टेक्स्ट उसको स्क्रैप करते हैं या कलेक्ट करते हैं. अगर आप स्पीच प्रोसेसिंग पे काम करें, आप स्पीच के फ्रेगमेंट्स को कलेक्ट करते हैं. That's the first step, which takes a lot of effort actually. Then we pre-process it. अगर आप ट्विटर को स्क्रैप करें, जो कि आजकल बंद है, so उसके बाद बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि नहीं होने चाहिए उसके अंदर. उसका हैशटैग मौजूद है, उसके अंदर डिफरेंट इमोजीज मौजूद है, टेक्स्ट के अलावा बहुत सारी चीजें मौजूद है उसके अंदर, उसका लिंक्स मौजूद है, यूट्यूब की वीडियोस मौजूद है. So we clean all of that data. And then in the third step, we label the text. कि जिसके अंदर हम कहते हैं कि इस टेक्स्ट के बारे में हम कुछ बताएं कि what is the actually it is. This is exactly the same as कि जो मैंने आपसे शुरू में कहा कि 3 का टेबल याद करने के लिए आपको 3 times 1, 3 times 2, 3 times 3 आपको याद कराएगा 1 से 10 तक. और अब क्योंकि अब 1 से 10 तक आपको समझ आ गया है, अब 20 टाइम्स भी कर सकते हैं, 100 टाइम्स भी कर सकते हैं, 1000 टाइम्स भी कर सकते हैं, 189 टाइम्स भी कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज कि आपने वो पैटर्न को सीख लिया. सो एक्चुअली ये जो ट्रेनिंग टेक्स्ट लेबलिंग है, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ द ट्रेनिंग डेटा. हम ट्रेनिंग डेटा प्रिपेयर करते हैं. And then we do feature engineering. That's a very specific topic, so I'll ignore that. But train the model, and then we give that model कि आप नया sentence दें, तो आपको आपका task perform करते हैं. जैसे कि मैंने आपको कहा 3 times 189. मैं ये भी कह सकता हूँ 3 times 1189. You can do that because 1 से लेकर 10 तक किया, पैटर्न लर्न कर लिए. अब जो भी नया टास्क आएगा आप कर सकते हैं. So this is the classical life cycle of any Urdu language processing task and for natural language processing tasks in general. So let's go through some examples. If I want to perform sentiment analysis is कि आपको मैं sentence दूँ और मैं आपको sentence को कहता हूँ कि आप बताएं या मशीन बताएं कि क्या ये sentence पॉजिटिव है या नेगेटिव है. Imagine कि मेरे पास एक मोबाइल ऐप मौजूद है, उसके ऊपर 10 मिलियन sentences of reviews मौजूद है. So I want to know कि मेरी ऐप को लोग पसंद कर रहे हैं, मेरी ऐप को लोग बुरा कह रहे हैं. So I perform sentiment analysis. कितने लोग पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, को खुद पढ़ के याद करूं, क्या मैं 20,000 करूं, मैं 30,000 करूं, how it should be, and then train the model and test the model. और जितने भी हम लोगों ने रिसर्च के काम करवाए उसके अंदर यूजुअली दिस लाइफ साइकिल टेक्स 1 year time, and out of that 80% of the time goes to these phases, the first 3 phases. सबसे मुश्किल काम ये होता है, आपने AI के अंदर डेटे की पाइपलाइन को प्रिपेयर करना. Once you prepare that guideline, then it is about training the model and then testing it. That's small piece of code, very small piece of code, maybe 20 lines, 30 lines, not more than that. So actually, most of the effort is on preparing for that. So let's take the example. So we do experiments on that and see
these are different types of models, how good they have performed. So on a scale of 0 to 1, they have performed 0.5, 0.5, 0.5. This was unbalanced data. So we provided some balanced data, the numbers improved. So this is the type of research that. Now, you give it one text, और आप कहते हैं इस text को इस language में translate कर दो. So you give it English and tell it text, and you say the machine to translate it to English or French or any other language. That's one subtype of natural language processing. We call it a machine translation. So अगर आपने machine translation करनी है, you still have to go through this whole pipeline, scrap the data, pre-process it, label the text for translation. So आप उसको कहते हैं ये sentence अगर आए तो उसकी ये translation है, दूसरे sentence की ये translation है, तीसरे sentence की ये translation. You give it 20,000 sentences and its translations. Now machine learns it, and when you give it a new sentence, it translates it. That's a machine translation task. Similarly, all of these tasks, they have the same life cycle. And as I said, in our experience, we worked 1 year to do this whole life cycle. 80% of the time on preparing the data pipeline. So this was the pre-LLM era. जब तक ChatGPT is one LLM. Google has its own LLM, large language model it is called. Similarly, Facebook has its own LLM and so on. So now when the LLMs have gone, this research that we do, this 1 year thing is no more valid. You don't need to spend 1 year on that. So how do we change our research in such a way that we can benefit from ChatGPT or LLMs? So let's see what LLM is. LLM is actually an advanced AI system designed to understand and generate human language. So ChatGPT क्या कर रहा है कि आप उसको कुछ भी लिख कर दें, it understands it and then generate the response for it and give it to you. That's what GPT. आपसे कहते हैं सर ये assignment दिया, write it there the question, it will give you the answer. Write कि मुझे इस चीज का कोड लिख दो, Python के वो Python में लिख दे रहा हूँ. Write your question, give it to it, Java में मुझे कोड लिख दो, it will return you. It understands your tasks and then generates the response of the task. These are the two things that it does. For example, I can ask ChatGPT कि अल्लामा इकबाल की नई पोइट्री जनरेट कर. So वो पोइट्री जो कि हज़रत अल्लामा इकबाल ने कभी भी नहीं लिखी होगी, ChatGPT उसको जनरेट कर देते हैं. और हम ये कहेंगे अल्लामा इकबाल ने यही लिखा था. We can do that. So it has some specification. आप इसको इस्तेमाल करके you can get the answer of any length, जिस length पे आपने जवाब चाहिए. Any format. आप कहते हैं मुझे tabular form में दे दो, मुझे CSV फाइल में दे दो, मुझे जिस भी format में दे दो, मुझे paragraphs की form में दे दे, एक heading लगाओ उसके नीचे introductory paragraph और उसके नीचे चीजें होनी चाहिए. You can say उसको जिस style में लिखना है, आप उसे कहें aggressive style में मुझे application लिख दो. Write on GPT. Write leave application in aggressive format. It will write to an aggressive application. Write up ChatGPT को give me a leave application in a polite format. It will generate an application which will be polite. Means ChatGPT understands it. अब आपको समझना है कि ChatGPT को इस्तेमाल कैसे करें. So similarly आप उसे करें किस level of detail में चाहिए, किस language में चाहिए. Ask ChatGPT मुझे उर्दू में application लिखो. It will write it in Urdu. So that's what the strength of ChatGPT. So I asked some questions from ChatGPT and I have screenshots there. In the first sentence, I asked it कि मैं आपको एक sentence दे रहा हूँ, perform a sentiment analysis of this text. And the text is RACIST 24 is a wonderful event. Thanks to the organizers who are sitting here for such a wonderful event, because inviting, managing and organizing 15 keynotes, 40 keynote lectures is a very challenging task. I asked ChatGPT, tell me what sentiment does it have? And the response of ChatGPT was,
the sentiments of this sentence is positive. And I was not happy. I changed it. I said, okay, you didn't reply me well. Give me one word answer. And it gave me positive. अब आप इमेजिन करें जो हमने स्टार्ट किया कि प्री चैट जीपीटी एरा के अंदर वी यूज्ड टू हैव ऑल दिस पाइपलाइन ताकि हम ये जान सकें कि ये सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है एंड नाउ इट इज वन क्लिक अवे सो इट मींस ये जो पूरा काम मैं एक साल के अंदर कर रहा था अब मैं एक चैट से कर सकता हूं एक चैट करूं आई कैन आस्क चैट जीपीटी sentences in Urdu, it will generate it. So now I don't need to go to this pipeline of 1 year duration, it will come immediately. So similarly, I asked ChatGPT another task. I said, perform Urdu translation for the following English text. So, वही sentence मैंने उसे दिया और see, this is the translation that it has performed. आप समझ सकते हैं इसको कुछ गड़बड़ है इसके अंदर. उसने RACAS को यहाँ लिखना था और उसने यहाँ लिख दिया some error so ChatGPT is not perfect I changed it a little bit कि मैंने abbreviations को बीच में खत्म कर दिया and it translated it well these are all screenshots so I just did it yesterday and I copied it for the students so ChatGPT की limitation है जब आप उसको कोई abbreviation दे देते हैं उस एब्रीविएशन को एज इट इज इस्तेमाल करता है लेकिन बाकी काम वो कर लेता है तो RCAST को उसने ट्रांसलेट नहीं किया बाकी सब कुछ ट्रांसलेट कर लिया सो वी गो ऑन एंड इस मैंने चैट जीपीटी के मुताबिक विकिपीडिया पे जो लिखा हुआ था अब मैं सोचा था चैट जीपीटी को इस बारे में इतना कुछ पढ़ना है तो मैं पूरा विकिपीडिया का पेज क्यों पढूं आई कॉपीड सम पार्ट ऑफ इट और मैंने चैट जीपीटी को कहा जनरेट 30 वर्ड समरी ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट और पूरा टेक्स्ट उसको दे दिया इट जनरेटेड समरी ऑफ इट रिकॉल कि हमने जब शुरू किया था हमने देखा था ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के टास्क हैं जिसके लिए पूरी पाइपलाइन करते हैं टेक्स्ट समराइजेशन ये भी मैं बात कर रहा हूँ सेंटिमेंट एनालिसिस मैंने थोड़ी देर पहले बात की मशीन ट्रांसलेशन के ऊपर हमने बात की तो ये सारे एनएलपी के टास्क हैं जो कि पूरी पाइपलाइन के बजाय वन क्लिक पर अब हो रहे हैं तो फिर अब मैंने रिसर्च क्या करनी फ्यूचर रिसर्च इन द प्रेजेंट एलएलएम क्या करनी है सो लेट्स सी what is the post LLM post ChatGPT era अब ChatGPT आ गया I don't need to create that pipeline तो फिर क्या रिसर्च करूं हमने सबसे एक NLP टास्क परफॉर्म किया अगर मैं ChatGPT को कोई सेंटेंस पास करूं तो क्या ChatGPT मुझे ये बता सकता है कि इस सेंटेंस में रिग्रेट है या नहीं है इस तरह मैं सेंटिमेंट एनालिसिस का पार्ट भी कर सकता हूं सो दिस वाज द रिसर्च क्वेश्चन ऑफ वन ऑफ माय स्टूडेंट्स कैन ChatGPT serve as an effective tool for regret detection this was the research question so अब ChatGPT अच्छा कर रहा है बुरा कर रहा है ये कैसे पता चलेगा सबसे पहले ह्यूमन बीइंग यानी मैनुअल एफर्ट बताएंगी कि क्या ये सेंटेंस में रिग्रेट है या नहीं और फिर हम ChatGPT से वही काम करवाएंगे द सेम एज कि जैसे आप एग्जाम देते हैं तो आपको क्वेश्चन दिया जाता है एक सवाल का जवाब आप लिखते हैं एक सवाल का जवाब टीचर लिखता है और फिर देखते हैं कि टीचर के जवाब के करीब जो जवाब है जितना ज्यादा है उतना ही दुरुस्त कंसिडर होता है सो इट्स द टीचर हु हैज द फाइनल अथॉरिटी या बुक के करीब तो बेंचमार्क को सेट करते हैं तो यहाँ पे हमने कहा है कि मैनुअल रिग्रेट डिटेक्शन का टास्क करेंगे और ChatGPT से भी करेंगे और फिर देखते हैं कि क्या होता है सो व्हाट वी डिड वाज हमने दो काम किए तो मैनुअल एफर्ट के अंदर हमने सेम काम किया हमने रियल वर्ड से स्क्रैप किया वही काम जो पहले हम करते थे हमने इसको प्री प्रोसेस किया और डेटा लेबलिंग की वी स्पेंड 6 मंथ्स डूइंग दैट और फिर हमने ChatGPT से कहा कि हमें रिग्रेट के 10,000 सेंटेंसेस दे दो उर्दू के अंदर इन ब्लिंक ऑफ एन आई उसने सारे सेंटेंसेस हमें दे दिए एक तरफ हमारी पूरी मैनुअल एफर्ट है और एक तरफ ChatGPT का एक मैसेज है अच्छा कौन सा नर्वस अगर तो मैनुअल वाला अच्छा है इसका मतलब है कि ChatGPT अभी वहां तक नहीं पहुंचा और अगर मैनुअल वाला बुरा है और ChatGPT वाला अच्छा है तो फिर इसका मतलब है मैनुअल एफर्ट की फ्यूचर में कोई जरूरत नहीं है आज का ChatGPT को इस्तेमाल करें डज दैट मेक सेंस यस सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस
तो हमने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, हमने मैनुअली भी डेटा जनरेट किया और ChatGPT से भी जनरेट किया. So these are some standard aberration procedures that we have employed: tenfold cross validation. What we used machine learning techniques, and we used standard Bayes procedure and equal reference scores. These are standard parameters that we use for analysis. So हमने क्या किया? हमने मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए. असल में हम चाहते क्या है कि अगर सोशल मीडिया पर कोई बंदा रिग्रेट का सेंटेंस पोस्ट करता है, हम उसे डिटेक्ट करें. वो ह्यूमन बीइंग ने लिखा है. तो मैंने अपने मॉडल को ट्रेन करवाया ह्यूमन जनरेटेड रिग्रेट सेंटेंस के ऊपर और डिटेक्शन करवाई ह्यूमन जनरेटेड के ऊपर. ये काम हम पहले भी करते थे. तो रिजल्ट कितने अच्छे हैं. फिर हमने कहा नहीं, मैनुअल एफर्ट तो फ्यूचर में खत्म हो जानी है, ChatGPT ने करना है. तो हमने कहा हम ChatGPT से कहते हैं कि आपने रिग्रेट सेंटेंसेस जनरेट करने, हम उस पर ट्रेनिंग करेंगे और अब देखते हैं कि वो ह्यूमन बीइंग को डिटेक्ट कर सकता है, लिखे रिग्रेट को. ठीक है. यानी ChatGPT जो रिग्रेट सेंटेंस देता है लगा रहे हैं. वो ChatGPT के सेंटेंस को ठीक करेक्ट कर लेता है, ठीक डिटेक्ट कर लेता है. वी स्विच्ड के ट्रेन करने रियल कॉर्पस के ऊपर, यानी हमने जो स्क्रैपिंग की उसके ऊपर और टेस्ट भी रियल पर करें, तो फिर भी रिजल्ट्स आर ऑन द हायर साइड, लेकिन उतने हाई भी नहीं है. फिर हमने ट्रेन किया. ये सबसे इंटरेस्टिंग रिजल्ट है और सबसे अहम रिजल्ट. अगर सिर्फ ये रिजल्ट आप समझ लें, यू अंडरस्टैंड द होल स्टोरी. ट्रेन करें आज ChatGPT कॉर्पस के ऊपर, यानी अब ChatGPT से 10,000 सेंटेंसेस जनरेट किया ब्लिंक ऑफ एन आई के अंदर. लेकिन जब मैं उसको रियल वर्ल्ड के अंदर इस्तेमाल करता हूं, जो असल ऑब्जेक्टिव है, तो वो तो रिजल्ट तो बहुत ही पुअर है. इसका मतलब ये है कि ChatGPT जनरेटेड डेटा को इस्तेमाल करके रियल वर्ल्ड के अंदर सोशल मीडिया मॉनिटरिंग नहीं की जा सकती, या ChatGPT को फर्दर ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा फॉर सोशल मीडिया स्कैनिंग. दैट्स द रिसर्च क्या फॉर दिस. सिमिलरली जब मैं रियल वर्ल्ड पे ट्रेन करता हूं और ChatGPT करता हूं, तो फिर रिजल्ट आर हायर देन दिस वन. अगर रियल वर्ल्ड का बाजार हो ना, तो ChatGPT को अच्छा डिटेक्ट कर लेगा. एंड फाइनली अगर मैं सारों को मिक्स कर दूं, तो रिजल्ट्स आर आल्सो हायर. सो एक्चुअली पूरी स्टडी का फाइनल आउटकम क्या है कि ChatGPT जनरेटेड डेटा रियल वर्ल्ड सेटिंग में इस्तेमाल नहीं हो सकते. जो लोग पूछ रहे थे कि AI की जॉब खत्म तो नहीं होती, सॉरी AI के आने के बाद वेबसाइट की जॉब खत्म नहीं होती. द डेटा साइंस पाइपलाइन विल स्टिल एग्जिस्ट, बट इन अ स्लाइटली डिफरेंट वे. सो similarly there are other topics. This is one example topic for you. There are many other topics. So let's say hate speech detection. Hate speech is considered as a crime, we all know it, according to the Cyber Crime Act of Pakistan. So मैंने कहा अच्छा चले ये काम मैंने hate speech detection सोशल मीडिया के लिए करनी है, तो उसके लिए ChatGPT से डेटा जनरेट करा लेते हैं. So see what I do. Generate a collection of 100 sentences that are hate speech. And what the ChatGPT has, so I am sorry, but I cannot fulfill that requirement. So ChatGPT कुछ काम नहीं करता. ये वाला काम तो अब भी उसे करना पड़ता. So I thought उसको उसने कहा है कि मैं नहीं कर सकता because creating or promoting hate speech goes against the ethical guidelines. I thought misunderstand कि उसने मैं तो रिसर्चर आदमी हूँ, इसको मैं थोड़ा और करता हूँ. मैंने से कहा I want to use it for NLP research. Please do that. And it said I am sorry but generating hate speech even for research purpose goes against the guidelines. It will not do that. So the pipeline for hate speech will remain the same. I went even further. Please, I am a pure academician. Please do that. It said no, I won't do it. So ChatGPT has this limitation that it won't generate hate speech
such kind of data. Which means all of these processes will remain the way they are. They will not be affected by ChatGPT because ChatGPT cannot generate their data. Similarly, I asked another question. I said, who is the Prime Minister of Pakistan? He said, as of my last update, January 2022, not from the Prime Minister of Pakistan. ChatGPT को ये भी नहीं पता election हो गए पाकिस्तान. And I said, okay, maybe it's not updated. I was even more specific. I said, who is the Prime Minister of Pakistan in 2024? Now read the response. I am sorry, but my last update is January 2022. So ChatGPT does not know the reality. अगर आपने ये देखना है विकी पे जाए अभी अपडेट हो चुका है बच्चे जिस टाइम और कर रहा था अपडेट हो चुका है so Wikipedia is more updated. ChatGPT doesn't know it. So this actually summarizes that there are many challenges for ChatGPT in future. Number one, LLMs or ChatGPT, it misses all the latest information. तो आप ChatGPT को इस्तेमाल कर सकते हैं उन टास्क के लिए जहां पे आपने कोई कंटेंट जनरेट करवाना है, लेकिन अगर आप उससे ये फैक्ट चेकिंग करनी है या आपने उससे कोई लेटेस्ट इंफॉर्मेशन चेक करनी है, ChatGPT is not for that purpose. So anybody whose job includes documenting, processing latest facts, ChatGPT उस जॉब को रिप्लेस नहीं करेगा as of today. Similarly, there are security and privacy issues जो कि ChatGPT एड्रेस नहीं कर सकता. So जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की डॉक्यूमेंट्स हैं, ChatGPT doesn't know it. जो मेरे कानून के अंदर लिखा है, जो मेरे आइन के अंदर लिखा है, ChatGPT doesn't know it because it was never trained on that data. So this will always remain a challenge for ChatGPT. So with that, I think the opportunity for you that any study related to hate speech detection, any study that's related to abusive language detection, any study related to social media monitoring, any study related to violation of the rules, this will never be changed even in the terms of ChatGPT. Whereas all those non-technical or less technical tasks that only talk about writing text and writing reports can possibly be replaced by ChatGPT. So that concludes my presentation. Thank you. You said that you have a research on hate speech. You said ChatGPT give me some data related to hate speech, but we didn't get any data. But I had a similar incident where I asked ChatGPT to give me 10 websites where I download pirated movies of Netflix, but he didn't give me data. Then I changed my question. Please give me 10 websites which I shouldn't use to download Netflix movies, and I got 10 websites. Yes, you can always find a way around the problem. That's why how machine is. लेकिन आप imagine करें यहाँ पे एक इंसान बैठा होता. That's the limitation of technology and human being is still gap. आप ये सवाल अच्छा, you should try it one more time because ChatGPT जो है उसके अंदर ना वो ट्रैक करता है देखो. Let me go to that. यहाँ पे अगर आप गौर करें, मैंने पहले ये मैसेज लिखा, generate a collection of 100 sentences that are hate speech, और उसके बाद मैंने लिखा, I want to use it for LLM research. What is this it? Collection of 100 hate speech detection. So actually जब मैं उसे चैट कर रहा हूँ तो उसको जो पुराने वाला सेंटेंस है, पुरानी वाली कम्युनिकेशन है, उसने मेमोराइज की है. अब it के लिए मुझे दोबारा hate speech में लिखना पड़ा. Actually it is able to relate, and I am actually surprised that कि आपने पहले सवाल के बाद दूसरा सवाल घुमा के पूछा. So I think you should recheck it because
ChatGPT has this capability कि वो आपकी जो behavior है उसको साथ साथ ट्रैक कर रहा है। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप दोबारा देखें तो शायद वो रिस्पॉन्ड ना करे। हाँ, अगर आप उसको एक दफा लिखें, क्लोज कर दें, एक नया इंस्टेंस खोलें और फिर दूसरा सवाल पूछें, फिर वो जवाब दे देगा, बिकॉज इट डज नॉट नो कि आप पहले आपकी इंटेंशन क्या था। लेकिन जब आपका हिस्ट्री मौजूद है तो हिस्ट्री को प्रिजर्व करें, उसकी बुनियाद पर आपको जवाब दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जनरेट अ कलेक्शन ऑफ 100 सेंटेंसेस, आई वांट टू यूज इट, उसको इट से पता चल जाए पिछली दफा मैंने क्या मैसेज किया। सो इट्स इंटेलिजेंट एनफ, ट्रेसेबिलिटी मौजूद है। Sir, my question is that, sir, how you see the AI in future, and sir, how we use the AI with Abrar? काफी ब्रॉड क्वेश्चन है। मेरा ख्याल है कि फ्यूचर के अंदर एक अगर स्मॉल आंसर दूं, क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम है, हर वो काम जो कि लेबर वर्क है, जिसके अंदर कोई आपको इंटेलेक्चुअल एफर्ट ट्रू सेंस में ह्यूमन बीइंग की नहीं चाहिए, दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय एआई। और ह्यूमन बीइंग वुड बी मूव्ड टू अ मोर स्मार्टर टास्क। तो आप इसको इस तरह रिलेट करें रियल वर्ल्ड एग्जांपल में कि जब एटीएम मशीन नहीं आई थी, एनीबॉडी फ्रॉम दैट टाइम, फ्रॉम द स्टूडेंट्स, प्रॉब्ली नो वन, सो एटलीस्ट आई रिमेंबर दैट टाइम के अकाउंट में जाते थे, चेक लिख के देते थे और उसके बाद वो कापियां खोल के उसके ऊपर एंट्री करता था और आपको पैसे देता था। तो जब एटीएम मशीन आई तो यूं लगा कि अकाउंटेंट की जॉब बैंक में तो खत्म हो गई है, बट क्या वो खत्म हो गई? बल्कि अब जो है उस वक्त अकाउंटेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ चेक ही कैश करता था या साथ में बिल। नाउ अकाउंटेंट डज 10 अदर टास्क। सो ह्यूमन बीइंग लेस इंटेलिजेंट टास्क पर जॉब खत्म हो जाएगी। They people have to translate themselves to a more higher or more intellectually higher job, and they will stay there. So people have to upgrade. So apps के अंदर वो effort, for example एक छोटा सा bot है कि क्या हर दफा नई ऐप के अंदर आपको लॉगिन और पासवर्ड करना पड़ता है, या अब ये चीज आ गई है कि आप गूगल के जरिए ऑथेंटिकेट करके ऐप के अंदर जा जाए। Now you authenticate only through Google और everything else जो है वो आपको नहीं करना। तो एक लेवल ऑफ ऑटोमेशन नहीं मौजूद है ना इसके अंदर। ऑटोमेशन विल टेक इट्स कोर्स, जहाँ के लेबर वर्क विल गो अवे एंड द स्मार्टर टास्क विल स्टे। थैंक यू सो मच। And he's a accomplished academic researcher in the field of computer science. He is currently he also holds the position of program coordinator for BS Artificial Intelligence program. He has completed his PhD and his topic of research was content-based automated file organization using machine learning. Throughout his career, he has supervised over 25 research theses and contributed to several research publications in international and well-reputed journals. So let's give a warm welcome. Research from Quranic text. So it is very new topic and informative, and you may have get some new information regarding the Quranic text based searching. Thank you very much. I tried to keep it short. When I was discussing the ideal presentation of Dr. Naan and Dr. Mary, so I had this thought that maybe we have good undergrad students there in the audience. So the topic when I select here that is about the searching from the Holy Scripture. So the main idea of the talk is to give you some insight that can be helpful for you to select your final year projects or research topics for your undergrad research
सारी बातें आप लोग सुन चुके हैं। आज भी डॉक्टर साहब अभी एल्गोरिथम्स के ऊपर बात कर रहे थे, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के ऊपर बात कर रहे थे। एंड आई वाज इन द ऑनलाइन सेशन यस्टरडे एज वेल, और बहुत सारी एनएलपी के ऊपर और एआई के ऊपर डिस्कशन आप ऑलरेडी सुन चुके हैं। सो मैं बहुत ज़्यादा डीप डिटेल्स में नहीं जाऊँगा कि हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसेस थिंग्स। Rather, my objective is to pose few questions for you. My objective is कि एक न्यू रिसर्च एरिया, एक न्यू रिसर्च पैराडाइम आपके सामने ओपन करूँगी जहाँ पर आप लोग फ्यूचर में काम कर सकते हैं। सो मैं जस्ट प्रॉब्लम को डिस्कस करूँगा। ऑल्दो आई हैव सम सॉल्यूशन इन माय स्लाइड्स, उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपको दूंगा। यू कैन गो थ्रू फर्दर डिटेल्स ऑफ दिस माय रिसर्च पेपर एंड a whole class of research papers are available on this topic, so आप उसको भी go through कर सकते हैं। So the main idea is concept-based searching on electronic text. So जब हम सर्चिंग की बात कर रहे होते हैं, अभी तक हमारे पास सर्च इंजन्स भी अवेलेबल हैं, कि वो तमाम के तमाम सर्च इंजन्स लाइक इफ वी टॉक अबाउट गूगल एंड बिंग एंड आस्क और व्हाटएवर सर्च इंजन्स की बात करें जनरली, तो सारे के सारे कीवर्ड्स की बेस के ऊपर सर्चिंग कर रहे होते हैं। You type some keywords, although there are search engines who are intelligent enough to give you suggestions कि आप इसके अलावा अगर कुछ और सर्च करना चाहते हैं तो क्या हो सकता है। But the core idea of all these scriptures, particularly if we talk about the Holy Quran, is कि बहुत सारी communication, बहुत सारी discussions जो इस तरह के scriptures के अंदर हो रही होती है, वो metaphors के अंदर होती है। वहाँ पर concepts discuss हो रहे होते हैं, वहाँ पर कुछ literal meanings होते हैं, बट उनके अगेंस्ट बहुत सारे डीपर इनसाइट्स मौजूद होते हैं, बहुत सारे डीपर कॉन्सेप्ट्स मौजूद होते हैं। सो द आइडिया इज हाउ वी कैन सर्च ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स जस्ट बाय गिविंग सम सॉर्ट ऑफ कीवर्ड्स टू द मशीन। लाइक अभी हम एलएलएम्स की बात कर रहे थे, चैट जीपीटी की बात कर रहे थे। आप चैट जीपीटी को कुछ टेक्स्ट प्रोवाइड करते हैं, कुछ कीवर्ड्स प्रोवाइड करते हैं और उसकी डेटाबेसेस के अंदर, तो उसके कॉर्पस के अंदर जो भी रेलेवेंट पैकेट्स पड़े हुए होते हैं, रेलेवेंट पैकेट्स को वो एक एल्गोरिथम से मिलाकर आपके सामने पोस्ट कर देता है। सो उन क्वेश्चंस के बिहाइंड जो कॉन्सेप्ट्स मौजूद हैं, जो थीम्स मौजूद हैं, हाउ वी कैन फाइंड आउट दोज थीम्स बिहाइंड दैट कॉन्सेप्ट्स, और वो हम मशीन के थ्रू प्रोवाइड कर सकते हैं। सो जब हम इसकी बात करते हैं, we have so many challenges ahead of us. The first thing is the concepts posted in Quran itself. And जब हम इस तरह के सारे बैरियर्स और बहुत सारी implications हमारे ऊपर आ रही होती हैं। इसके साथ साथ जो कॉन्फ्लिक्ट्स हमारे पास मौजूद है, दैट इज इन अरेबिक, एंड अरेबिक इज अ वेरी सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज, इज अ वेरी स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज, लेकिन उसके साथ साथ स्ट्रक्चर होने के साथ साथ उसके अंदर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी मौजूद हैं। एंड देन वी हैव वन चैलेंज ऑफ कंप्यूटेशनल यहाँ से देखे जहाँ पर हमें रिलीजन को, रिलीजियस स्टडीज को, रिलीजियस टेक्स्ट को कुछ एल्गोरिथम से पास ऑन करवाना है, एंड वी हैव टू maintain the accuracy that we demand from such machines and from such applications. So, if we talk about the Quranic concepts, कुरान की जब हम बात करते हैं, इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट्स को प्रेजेंट करने का वे है, जो कॉन्सेप्ट्स को फॉर्मुलेट करने का वे है, is very unique way of describing different type of concepts. First of all, अगर हम बात करें तो हमारे पास जो sentences के structure हैं, वो किसी एक पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे कुरान। There are multiple structures and multiple ways जिसके अंदर concepts हैं वो describe होते हैं। And then second thing is कि जब भी फ्यूचर की बात करनी होती है या प्रेजेंट की बात करनी होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम कुरान नॉर्मली पास्ट टेंस को यूज किया जा रहा है और पास्ट टेंस के थ्रू फ्यूचर को और प्रेजेंट को डिस्क्राइब किया जा रहा है। एंड द फीचर इज, चाहे आई डिस्कस अर्लियर,
कि मेटाफर्स बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं, और जब मेटाफर्स इस्तेमाल होते हैं तो उन मेटाफर्स, वो मेटाफर्स एक मेटाफर जो है वो मल्टीपल मीनिंग्स एंड मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स प्रोवाइड कर रहा होता है. लाइक वी हैव एन एग्जांपल हियर दैट अल्लाह डज नॉट बर्डन अस विद beyond that clear. This is the verse 286 from chapter 2 surah Baqarah. और इस वर्स के अंदर the words are very similar that Allah does not burden a soul beyond that can bear. But यहाँ पर अगर हम देखें तो conceptually the Quran is talking about the mercifulness of Allah Almighty. Quran is talking about the justice. Quran is talking about the capacities that a man can bear or not. So there are multiple concepts that are lying behind these simple words. And we have another verse that Allah is the light of the heavens and earth. The example of His light is like a niche within which is a lamp. Now यहाँ पर मेटाफर्स इस्तेमाल होते हैं. अल्लाह को यहाँ पर एक नूर के मेटाफर के साथ डिस्क्राइब किया गया है कॉन्सेप्ट ऑफ अल्लाह माइंड. सो उस नूर के हमने लिटरल मीनिंग्स लेने हैं, हमने उसके कॉन्सेप्चुअल मीनिंग्स लेने हैं. एंड वन थिंग व्हिच इज लाइंग इनसाइड दिस वर्स इज that man is being described and the followers and believers are being described in this verse as torch bearers of that light. Now literal meanings में ये torch bearers, followers and believers are not mentioned throughout the verse, but that is the deeper meaning and concept. And if we want to seek knowledge and seek guidance from the Quran, and I want to ask from the Quran and any search engine that is based upon the Quran, and I want to ask who are the believers or what is the role of the believers and can believers be the torch bearers of that light. So keyword based searching हमें इस तरह के कोई answers provide नहीं करते. So we need larger, deeper, more sophisticated type of search engines जिनके थ्रू हम इस तरह के concepts को identify कर सकते हैं. So if we talk about traditional Arabic linguistics, so sophistication के साथ साथ बहुत सारे challenges भी इसके अंदर मौजूद हैं. The first thing is the orthography of Arabic. For instance, there is one word in Arabic language which is Jannah, Jannat. वो हमारे वक्तों के अंदर normally माओं के कदमों के नीचे हुआ करती थी, आजकल टिकटॉक के ऊपर भी होती है. So that is one thing, one word that we have heard a lot of times. So if we just change the diacritics, अगर मैं जन्ना को जिन्ना कर दूं, so जीन जो है उसके ऊपर जबर के बजाय जेर लग जाए, तो that describes another different meaning and entirely different meanings. So जिन्ना means jinn, which is another sort of creation. और अगर किसी जीन के ऊपर जेर के बजाय पेश लगा दी जाए, तो it becomes जुन्ना. And it also have some meanings, which is ढाल, जिसको हम कहते हैं shield. So there is one word, and just by changing the diacritics, we have entirely different meanings on the word. And this is not just one example. We have so many examples of such like in Arabic language. Secondly, if we talk about morphology, so morphology के अगर हम बात करें, we have one word here, فَجَعَلْنَاهُ. So this is one simple word. अगर हम इसकी ट्रांसलेशन की बात करें और मीनिंग्स की बात करें, तो इस वन वर्ड के अंदर डिस्क्राइब हो रहे हैं. सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फोर डिफरेंट वर्ड्स. फा, बस या और, जाल करार दिया, ना हमने, उन्हें. सो दिस इज नॉट अ वन वर्ड. सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फोर वर्ड्स डिस्क्राइब इन सिंपल वन वर्ड. सो दिस इज द मॉर्फोलॉजी कि हम किसी भी एक वर्ड को देखते हैं और उस वर्ड की मॉर्फोलॉजीज हम ड्राइव करते हैं कि उसके अंदर कितने साबके और लाके लगे हुए हो सकते हैं. सो नाउ दिस इज अ सिंपल एग्जांपल. लेकिन अगर हम बात करें कॉन्सेंस, इन इंग्लिश वी यूज्ड टू आस्क व्हाट इज योर नेम. सो नेम के लिए जो अरबिक के अंदर वर्ड इस्तेमाल होता है दैट इज इस्म, अलिफ सीन मीम. अगर हम इसके रूट वर्ड की बात करते हैं तो दैट इज सीन मीम वाव, सामावा. So Samava changed into Asama. And how that happened? It's simple Arabic. जब भी तीन लेटर्स अलिफ वाव या या आ जाते हैं अरबिक में,
तो ये completely अपने structure को, अपनी positions को altogether change कर देते हैं. So with that type of characteristics of Arabic language, we have to drive the morphologies. So that is another challenging task. So etymology की हम बात करें Arabic language के अंदर, Arabic as I said before कि पूरा एक बहुत structured language है. So if you have one word, you can form almost around 500 words from a single word. So some of the examples are here. ये मैं उन words की बात लेके जाते हैं, which is the tense of future and present. 14 से उसके बन सकते हैं. फिर फेल जो है उसकी दो हालतें होती हैं कि वो पहले मजबूर हो सकता है या मारूफ हो सकता है. सो 28 जो हैं वो 56 में कन्वर्ट हो जाएंगे. सो इसके 10 अबाव हैं जो 3 लिटरल वर्ड्स हैं उनके. सो 56 को आप सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं विद 10. और इसके अंदर अभी मैंने जो आम्र के और नहीं के सीगे हैं वो शामिल नहीं किए हैं. अभी इसके अंदर मैंने नूने सकीला और नूने शदीदा सकीफा होती है उसके जो वेरिएशंस हैं वो शामिल नहीं हैं. सो अराउंड 500 मोर लेस 500, क्योंकि कुछ चीज़ें मुस्तमल होती हैं, कुछ इस्तेमाल में आती हैं, कुछ नहीं आती. अराउंड 500-600 वेरिएशंस ऑफ ए सिंगल वर्ड यू कैन हैव. उसके बाद हमारे पास डिस्कोर्स एनालिसिस एंड डिबेट्स होते हैं. कुरान के अंदर कुछ लॉजिकल आयात भी होती हैं जिनको हम लेटर ऑन डिस्कस करते हैं. वन अनदर प्रॉब्लम विद अरबिक लैंग्वेज व्हिच इज देयर आर टू एग्जांपल्स लाइक वमा उनजिला अलैना वमा उनजिला इलैना. सो जब मैं बोल रहा हूँ तो अलैना और इलैना को अंडरस्टैंड करना इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क. बट जब इसको हम लिख रहे हैं या टेक्स्ट के ऊपर हमने प्रोसेसिंग परफॉर्म करनी है, इट बिकम्स डिफिकल्ट एट टाइम्स. कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स की बात करें, आई विल कीप इट शॉर्ट. डॉक्टर साहब इससे पहले काफी सारी बातचीत इसके ऊपर कर चुके हैं, वो पाइपलाइन कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं कि किस किस लेवल के ऊपर कौन कौन से टास्क एनालिसिस हमें परफॉर्म करने होते हैं. बट व्हेनेवर वी हैव टू डिजाइन एनी एप्लीकेशन वी हैव टू perform these 4 kind of tasks. Syntactic tasks हैं जहाँ पर हम word level and sentence level analysis करते हैं, structure of the sentence को understand करते हैं. Then we have semantic analysis जहाँ पर हम meanings की बात करते हैं. Then discourse and pragmatics analysis होते हैं जहाँ पर हम meaning को understand करते हैं. And sometimes कुछ statistical tasks perform कर रहे होते हैं further analysis के लिए. सो ये एक कंप्लीट अंदर साइंस है कि जिसके अंदर हम कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स की कंप्लीट बात कर रहे होते हैं और उसके एनालिसिस परफॉर्म कर रहे होते हैं. सो जो अवेलेबल सर्चिंग टूल्स हमारे पास मौजूद हैं कुरान मजीद के ऊपर काम करने के लिए, there are some of the tools जो मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं. एंड द रिजल्ट्स जो मैंने इनके ऊपर कुछ टास्क परफॉर्म किए, द रिजल्ट्स आर वेरी इंटरेस्टिंग. फॉर इंस्टेंस देयर इज वन वर्ड हेल्प. So help in one searching tool उसने 198 वर्सेस के अंदर कहा है कि help का वर्ड मौजूद है. And literally अगर हम चेक करें there are only 83 वर्सेस जहाँ पर actually help का वर्ड जो है वो कुरान मजीद के अंदर आया है. या एक और की हम बात करें sky जिसको समा या समावार इंट्रोड्यूस किया जाता है. So ये सर्च टूल्स जो हैं 47, 39 and 45 वर्सेस के अंदर इसको सर्च किया है. बट एक्चुअली कुरान मजीद के अंदर ये 310 टाइम्स आया है. सो या तो जो हमारे पास सर्च इंजन्स हैं वो ब्रैकेट्स के अंदर लिखी हुई जो बातें हैं उनको भी एज ए कीवर्ड सर्च करके दे देते हैं, या फिर सिंपली इग्नोर कर देते हैं अगर कभी ट्रांसलेशन के अंदर या ब्रैकेट्स के अंदर वो वर्ड नहीं आए या एक्चुअल फॉर्म में कहीं पर वो वर्ड्स इस्तेमाल नहीं होते. So, using those kind of search engines, I want to seek knowledge about any topic from the Quran. So, what is the probability? कितने realistic results मुझे मिल सकेंगे? Very few of them. So, ultimately, we have to dig deeper. अगर हम इन tools को, इन approaches को use करना चाहते हैं to seek guidance. So, जो common problems यहाँ पर हमारे पास मौजूद हैं, फुल टेक्स्ट सर्च इंजन अवेलेबल नहीं है, सिर्फ वर्सेस जो हैं वो रिट्रीव करके दे रहे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम. बेसिक सर्च ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं. जो लिंग्विस्टिक ऑपरेशंस हैं वो बहुत वीक नेचर के यहाँ पर मौजूद हैं.
जो contextual and conceptual searching है वो current tools के अंदर available नहीं है and in short हम कह सकते हैं कि ये सारी की सारी properties एक चीज की वजह से merge हो रही हैं and that is the current research going on Quranic searching is keyword based. So जब हम concepts की बात करते हैं so what do we mean by concept? For instance एक concept मैंने यहाँ पर present किया हुआ है which is the prophet. Now, अगर हम कीवर्ड बेस्ड सर्चिंग की बात कर रहे हैं मैं प्रॉफिट का वर्ड लिखूं तो जितनी भी वर्सेस के अंदर दी वर्ड प्रॉफिट और नबी या नबा या अंबिया आया हुआ होगा वो वर्सेस मुझे सर्च करके दे दी जाएगी. But when I want to learn about prophets from the Quran, so what I need is that Quran should tell me the stories and the examples and the guidance of the or the verses about the different prophets which are mentioned in the Quran. So these are the names of some of the prophets which are mentioned in the Quran. लेकिन जब भी हम सर्च टूल्स के थ्रू इसको सर्च करते हैं तो किसी नबी का नाम आया है उसको सर्च नहीं करेगा, नबी का वर्ड आया है तो वो वर्ड सर्च होगी. So जब हम नबी की बात कर रहे हैं तो कॉन्सेप्चुअली इसमें जितने भी प्रॉफिट्स हैं वो सारे के सारे इस कॉन्सेप्ट के अंदर आने चाहिए. ये एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पर मौजूद है लाइक पैराडाइज. जहां पर पैराडाइज का एग्जैक्ट वर्ड आया है वो वर्ड्स को सर्च हो जाएगी लेकिन पैराडाइज एक कॉन्सेप्ट है और उस कॉन्सेप्ट के साथ हमारे पास बहुत सारे और कॉन्सेप्ट्स मौजूद हैं. गार्डन का कॉन्सेप्ट मौजूद है, ईडन का कॉन्सेप्ट मौजूद है, फिरदौस का कॉन्सेप्ट मौजूद है, उसके बाद लाइफ आफ्टर डेथ का कॉन्सेप्ट इसके अंदर मौजूद है. बहुत सारे और अंडरलाइन कॉन्सेप्ट्स हैं जो इसके अंदर मौजूद हैं. So that is what we meant by concept. So if I want to search about paradise, I want to know what is paradise, how I can go to the paradise और इसको achieve करने के लिए जो parameters हैं वो कौन-कौन से होंगे and who are the people that are actually going to paradise. So these are all subline concepts जो यहाँ पर मौजूद होने चाहिए. So डेप्थ ऑफ द टास्क में बात करें आइडिया बड़ा सिंपल है कि सर्चिंग जो है वो कीवर्ड बेस्ड नहीं होनी चाहिए, वो कॉन्सेप्ट बेस्ड होनी चाहिए. सो इसकी जो डेप्थ है इस टास्क की वो क्या है? द की थिंग्स वी शुड नो जो हमें यहाँ पर परफॉर्म करनी है, हमें करनी चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू हैव द नॉलेज ऑफ मक्की एंड मदनी आयास and then we know the clause of regulation and सोर्स जो है वो उसका मौजूद होना चाहिए. एंड देन कुरान मजीद की बात करते हैं तो उसके अंदर पेरेबल्स मौजूद हैं, बहुत सारी तमासील मौजूद हैं. उसके अलावा आयात जो हैं उनकी दो टाइप्स हैं, मुहकमात हैं, मुशाबिहात आयात मौजूद हैं. सो इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें हैं. फिर कुरान के अंदर फिक्र को डिस्कस किया गया है, हिदायत को डिस्कस किया गया है, जनरल लाइफ के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए गए हैं. सो ऑल दीज थिंग्स आर मेंशन्ड इन कुरान एंड समटाइम्स वी सी वन वर्स describing so many different concepts and sometimes we see verses, there are multiple verses that are describing one concept. So we should have the knowledge of all these things and then we can move towards this concept is subject. So this is one model we have proposed so far and I can see my students here sitting in the audience और जो इसके ऊपर actively अभी काम कर रहे हैं. We have research group in GC University जहाँ पर हम इसके ऊपर फर्दर इसको रिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं. दिस इज व्हाट वी हैव प्रपोज्ड सो फार जिसके थ्रू हम इस कॉन्सेप्ट सर्चिंग को अभी बहुत प्रिलिमिनरी स्टेजेस के ऊपर है बट वी आर वर्किंग ऑन इट कि हम इसका एक फुली फंक्शन मॉडल और इसकी एप्लीकेशन जो है वो डिजाइन कर सकें. सो थ्रू दिस कॉन्सेप्ट इज सर्चिंग फ्रॉम कुरान we can have enhanced understanding, the contextual relevance, investigative research and interdisciplinary exploration, and we can bring some sort of harmony behind different conceptual groups and different groups that are working on the Quran. So उनके दरमियान कुछ harmony interface harmony और सब चीजें करने की कोशिश कर सकते हैं. So that's all from my side. So you're welcome to ask any questions. No questions? Thank you. Thank you very much, sir. Now I will request Dr. Hanad
Dr. Shazad Teba to come on stage for souvenir and certificate distribution. I will call upon you to come on time, including remarks. And now I request Dr. Usman to come on stage on behalf of Dr. Muhammad Usman as well. He will receive the certificate. He has joined us online.
request respected speaker, Professor Dr. Rauf Azam, to come on stage for the speech I think, sir, you are now one of the favorite teachers of all the audience. Now I request another great scholar and Professor Dr. Rauf Azam to come on stage. Thank you, sir, for such an informative session. Thank you. Now I request Dr. Sayyid It is now again requested to all the skeleton members and speakers to stand in front of stage for group photo, and then we will proceed for lunch. Thank you.
factors for decision making as well. Because our farmer is very unknowledgeable, very limited knowledge of the technology usage. It does not know about the soil, that it is using same type of seed and same type of soil for the same crops, and it does not Pakistan get benefits from this using technology and get bumper crop. And we are always in the food deficiency problem. How data analytics is transforming agriculture? There are these 4 or 5 components are very important in the data analytics for in the transforming agriculture domain. Firstly, the data collection. That is very important for any farmer. What type of soil factors I discussed in previous. Then the predictive analysis, optimization, the crops management, how types of crops we can use it, and then disease and pest conditions, what type of diseases attacks and pest problems that crop faces, and then the prediction models as well. How can data driven and digital agriculture transformation in the food system as Pakistan third world country we have looked at use technology, digital techniques that can enhance use of techniques and work agriculture field because our farmers are our demand is also not very familiar to use of these technologies. These are some components global food demand and sustainable agriculture models. How as the population size increases, the demand of the food is also increasing with the passage of the time. These are the sustainable agriculture models that we use in the people in the agriculture field. Precision farming, smart agriculture concept is very familiar nowadays. Similarly, predictive analysis and supply chain efficiency is also an important component for the food efficiency and decision support system that can predict how the efficient and how get better food from these using these technologies rather than using the traditional methods of food farming. Fascinating statistical internationally because there are the fancy digital forum tells us that 28.5 million people like the last 20 years facing the food crisis, and precision farming is also, as I told, that cattle farming is one of the biggest business in the world, and using traditional techniques, people did not get any type of benefits rather than we get from other methods. Similarly, these are the 4 important pillars that can use in any component, that is the data collection in the form of cattle farming, in the form of soil, in the form of agriculture. Then we can use the data integration with different tools and real-time monitoring and decision support systems that can give us the true picture how beneficial this process model is and how we get advantages from these techniques of artificial intelligence. This is the new concept that is introduced in nowadays, especially the smart farming. We do not rely on the traditional mechanism, we rely on the smart IoT system where all these techniques and methods are used immediately. This is some role models of traditional and precision agriculture, how we use the traditional models of farming and precision agriculture using AI-based techniques. We use these models and techniques. If we go with artificial intelligence in agriculture, it was using to enhance the farming practices as well. In applications such as automation, automatic predictive analysis, disease detection, AI predictive analysis helps the farmers make informed decisions in mitigations and pest control as well. Rather than our farmers depend upon the traditional techniques, using these new novel approaches of artificial intelligence, you can predict the different type of diseases on the plants, fruits, or even in the soil. We can get the better benefits and optimize the crops as well. Increase the efficiency, precision farming, and early detection and intervention. So, one of the factors is early detection.
that is more beneficial in the AI sector. Some of the challenges is data quality and availability. If it is not good, then we cannot get better. Integration with the existing system is also one of the best phenomena, and user trust and understanding. If users are not trusted and trustworthy, then we cannot use the artificial intelligence in the precision agriculture sector. How precision agriculture will enhance global food efficiency, efficient resource allocation, reduce the environmental impacts, the yield maximization, and data-driven decision making. These are the 5 pillars that we discussed earlier that are used in different types for the data collection, using predictive modeling and decision support system benefit the farmer to get maximum benefit by using these technologies. For concluding on this talk, rather than our insight and overview of how we use artificial intelligence, normally we are using AI in the field of agriculture, in the field of platforms. We can get many benefits and we can increase the yield and crops and early detection of diseases by using these technologies. Like I discussed one of our projects that our app will detect any type of diseases attack on the citrus and mango plants, and also tell us in the multi-languages platform like English, Urdu, Marathi, Punjabi as well. There is immense scope for our undergrad students rather than doing the traditional FYP projects of automation of any pharmaceutical company or any other thing. They can work on data-driven capabilities like the projects of FYP or agriculture-based health. Thank you so much. Any questions? He has shared the email address as well if anybody is interested. Okay, now proceeding to the next section. Now I'm going to invite Dr. Muhammad Usman Ali. He's present. Yes, he's an assistant professor in the Department of Computer Science at University of Gujarat, and also working as a head of software development cell. He received his PhD in Information and Communication Engineering from Yongnam University of South Korea, and his research interests span indoor positioning, computer vision for robotics, navigation, and NLP. So let's give him a warm welcome to Dr. Muhammad Usman Ali. सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इंडोर पोजीशनिंग है क्या,
उसके दोनों सर्कल आपस में क्रॉस कर रहे होंगे, इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, तो आप देखें दो सर्कलों को जब आप मिलाते हैं ना तो वो 2 पॉइंट्स पे आपस में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। तो जब उन 2 पॉइंट्स में भी अगर आप मोर प्रेसिजन जा रहे वो 1 पॉइंट पे अपने आप को क्रॉस करें फिर तीसरा सर्कल भी जाए, तो वो तीनों सर्कल मिलके मेरी पोजीशन को या किसी रिसोर्स की पोजीशन को डेफिनेट कर देंगे, कोई एक्स वाई एक पोजीशन। लेकिन ये बहुत अच्छा है कि सेटलेट्स चार्ट हो, क्यों कि जब हम 2D में हो तो हम सर्कल डिस्कस करते हैं, जब 3D में चले जाए तो स्फीयर्स को डिस्कस किया जाता है। जब स्फीयर्स आते हैं 3 तो वो या आपको जमीन पे शो कर रहे होंगे या फिर आपको हिला रहे होंगे। तो हिला वाले पॉइंट को अगर आपने ना लॉक करना है देन यू हैव टू ब्रिंग ए 4th सैटेलाइट सिग्नल। तो इस तरह से 4 सैटेलाइट सिग्नल मिलने होंगे तो फिर आपको डेफिनेट पोजीशन जो है अर्थ पे आती है। तो जो टेक्निक है इसमें यूज होती है वो जो सैटेलाइट्स हैं वो टाइम सिग्नल सेंड करते हैं और हमारा जो मोबाइल है ना वो उनमें डिफरेंस चेक करता है कि किसका सिग्नल जल्दी आया है किसका सिग्नल नहीं। वो जो टाइम डिफरेंस है ना उससे वो उससे डिस्टेंस कम डालता है और इस तरह से आपकी पोजीशन जो है वो उसका पता चल जाता है कि आप कुछ चीज़ें चाहिए हमें पोजीशन। तो जैसे आपने आपको एक्सपीरियंस कर रहे हैं नेविगेशन के लिए चाहिए, एक्सेस ट्रैकिंग के लिए चाहिए कि इस वक्त पर्टिकुलर नर्स या डॉक्टर किधर है या कोई पेशेंट है जो असिस्टेंस की ज़रूरत है तो हम उसे ट्रैक कर सकते हैं कि वो कहीं किसी ऐसे एरिया में तो नहीं है जहाँ पर उसे हेल्प की बात कर पेशेंट वॉशरूम में जाके गिर जाते हैं फिर हम सिस्टम बना सकते हैं कि जो हमें बताएगी कि पिछले 10-15 मिनट से वहीं है या आधे घंटे से वहीं है तो वो फिर आप उसे सिस्टम दे। इसी तरह लोग एडवर्टाइजमेंट के लिए जब किसी बड़े शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो आपके इंटरेस्ट के रेलिवेंट आपको एडवर्टाइजमेंट करते हैं। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इमरजेंसी सर्विस। एम्बुलेंस जो है वो बिल्डिंग के बाहर तो पहुँच जाती है लेकिन उससे ये नहीं पता चलेगा कि किस वक्त जो पेशेंट है वो कौन से फ्लोर पे है। जब अगर एक फ्लोर पे 2-3 अपार्टमेंट्स हैं तो उनमें से कौन से अपार्टमेंट में है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें एक्चुअली कंपेयर कर रही हैं कि हम इंडोर पोजिशनिंग सिस्टम जो है। तो GPS के साथ सिंपली जो मसला है वो जो कि इंडोर काम नहीं करता वो सिर्फ यही है कि उसे मल्टी पाथ प्रोपगेशन जो है उस पर असर रहता है। डायरेक्ट नहीं है मेरे से, मेरी जो फ़ोन है वो डायरेक्टली सेटेलाइट के साथ लाइन ऑफ साइट है, नॉन लाइन ऑफ साइट। जब नॉन लाइन ऑफ साइट हो जाता है तो फिर फासलों में फर्क आ जाता है, तो टाइम ऑफ अराइवल है उसमें भी फर्क आ जाता है क्योंकि वो मल्टीपल पाथ से गुजरा हुआ मेरे पास सिग्नल आएगा तो वो फिर मेरी पोजिशन को वो खराब कर देगा। इसलिए अगर आप अपनी उस पर देखेंगे अपनी लोकेशन गूगल मैप पे तो आप एक छोटा सा सर्कल होता है वो वाला बड़ा सर्कल होता है थोड़ा ट्रांसपेरेंट तो बड़ा वाला सर्कल है वन सर्कल बड़े वाले सर्कल में आप नहीं है लेकिन अभी जैसे आप देखेंगे बाहर चले गए तो वो सर्कल श्रिंक होकर छोटा हो जाए फिर आपको बताएगा यू आर इन 1, 2, 3 मीटर एक्सेस। और इसमें भी बहुत बड़ी वो एप्लीकेशन है कि जो GPS के सिग्नल है ये हम अपनी मिलिट्री जो पर्पज है उस पर नहीं यूज़ कर सकते, इसलिए हमें अपने सिस्टम पर क्योंकि मिलिट्री के लिए ये एरर हमें बड़ी प्रिसाइज ये भी हमें फोर्स करनी है कि हम अपनी एप्लीकेशन सिस्टम
या हम कोई टैग लगा दें। इसकी बड़ी अच्छी एप्लीकेशन ये है, जब आप कहीं फॉरेन ट्रैवल करते हैं तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि जो प्लेन है वो वेट कर रहा है किसी पैसेंजर का, और पैसेंजर कहीं बैठ जाए और वो जो क्रू है वो बेचारे दौड़ रहे होते हैं इधर से उधर घूमना चाहिए। तो जैसे ही अगर पैसेंजर एंटर हो तो उसके साथ एक टैग लगा दिया जाए, यू कैन इजीली इंटरैक्ट इस तरह से हमारी बेशुमार और एप्लीकेशन है जो कि इंटरेस्टिंग है आपको कि वो है कि आप ऐसे बंदे को ट्रैक करना चाह रहे हैं जो कि साथ कुछ भी नहीं करते, जैसे कोई किसी ऐसी इम्पोर्टेंट जगह जैसे म्यूजियम है, वहाँ कुछ बड़ा कीमती चीज़ें पड़ी हैं और उससे जो कोई लेने आ गया अनलॉफुली, तो वो तो साथ में मोबाइल में क्या है, उससे हम क्या कहते हैं, उसके लिए ये कहते हैं कि दीवारों के अंदर जो ऐसी डिवाइसेस लगा देते हैं जो कि आपस में बातें करते हैं, एक तो सिग्नल सेंड करते हैं दूसरी रिसीव करते हैं। तो जैसे बंदा उनकी जो डायरेक्ट टॉक है उसके दरमियान आएगा तो फिर हम उसे ट्रैक करें। ये ऐसी या जिस तरह हमारी इंडस्ट्री के इंस्टॉलेशन है, कामिक इंस्टॉलेशन है, वहाँ अपने ट्रैक करने में कोई आदमी या यूजर आदमी है, इसलिए वहाँ पे हम डिवाइस की टेक्निक। तो डिवाइस बेस में तीन मैनेजमेंट बेशुमार वाईफाई से हम जो स्पेशल की टेक्निक है उससे हम ब्लूटूथ जो है उससे हमारे मोबाइल में वो रिसीवर है उससे हम पर्सन को ट्रैक कर सकते हैं। और आजकल जो हाईलाइट के साथ जो हमें जल्दी हमें प्रोवाइड करने के डेटा वो है अल्ट्रा वाइड के ऊपर आकर तो मैं यहाँ पे वाइफाई फंडामेंटल को डिस्कस करूँगा क्योंकि हमने कुछ टेक्निक इसके ऊपर किया। तो पहले मैं आपको बताता हूँ तो सिंपली समझें कि इस हॉल में कल में 4 एक्सेस पॉइंट लगे हैं, इस कोने में इस कोने में तो अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मुझे कौन से एक्सेस पॉइंट के सिग्नल सबसे ज़्यादा उससे भी ये वाले और उस तरह से। तो ये जो 2 एक्सेस पॉइंट है ये डिवाइड करें कि मैं हाल के किस तरफ, क्योंकि वो दोनों इस तरफ। अगर मैं पीछे चला जाऊँ तो उन दोनों के स्ट्रॉन्ग सिग्नल मुझे उस तरफ शो करें। अब इन दोनों के दरमियान जो फर्क है वो उनके सिग्नल शो करेंगे। अगर इसका स्ट्रॉन्ग है तो मैं हाल के 4 हिस्से करें तो मैं इस पोर्शन में, इसको अगर आप मजीद बढ़ाएं तो जो टाइल है इसके सेंटर में अगर मैं खड़े हो इस एक्यूरेसी के साथ अगर पोजीशन फाइंड करना चाहें तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले प्री जो मेरी जो प्रिपरेशन है अपने सिस्टम की, मुझे इस टाइल के हर टाइल पे खड़े होके एक रीडिंग रिकॉर्ड एक एक्सेस पॉइंट की यहाँ पे क्या मुझे ये पूरे हाथ की रीडिंग पहले स्टोर करूँगा अपने पास और वो रख आप कोई पर्सन है वो कहता है कि मैं हाथ में जा रहा हूँ आपसे ट्रैक करें तो वो मुझे सिग्नल सेंड करे लोकेशन भी बताए तो मैं उसके जो सिग्नल है उसकी मैचिंग अपनी उस जो पहले मैंने डेटा कलेक्ट किया उसमें फाइंड करूँगा वो मैं टैग लगा कर कि उसमें एक्स वाई साथ है जैसे जहाँ वो मैच कर देगा तो दिस इज कॉल्ड फिंगरप्रिंट इन वन। तो फिंगरप्रिंटिंग में एक नई आजकल बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अभी हमारे एक्सेस पॉइंट इसको बहुत कम सपोर्ट करते हैं लेकिन आजकल आने शुरू हो गए। ये जो फिंगरप्रिंटिंग पहले आपको मैं सिग्नल बेस यानी सिग्नल स्ट्रेंथ लेकिन ये नई टेक्नोलॉजी है टाइम बेस वही कंसेप्ट है जो सैटेलाइट पर। ये क्या करते हैं कि ये एक्सेस पॉइंट
ये टेक्निक जो है सब मीडियम की 1 मीटर से कम एक्यूरेसी बता सकती है। एक टायर के अंदर आपको बता पीछे का, लेकिन जो पहली टेक्निक है उसका 2 मीटर है, वो जरा इतनी अच्छी नहीं, लेकिन ये टेक्निक जो है ज़्यादा ये आजकल पीछे लोग इन दोनों टेक्निक्स के अंदर एक प्रॉब्लम मसलन क्या है कि जो वाईफाई वाली है वो उसका ये मसला है कि आपको इस हॉल की हर टाइल पे खड़े होकर डेटा कलेक्ट करना, लेकिन आप अंदाजा लगाएं कि इस टेबल पे नहीं, आप इस टेबल पे खड़े होकर आप कलेक्शन करेंगे, लेकिन बात करिए कि अगर कुछ कमरे लॉक है तो आप वहाँ पे डेटा नहीं कलेक्ट कर सकते। फिर क्या हुआ, आपने सारी कलेक्शन तो कर ली, लेकिन सब हो किसी ने वहाँ से एक्सेस पॉइंट उठा के सेंटर में लगाया, तो वो आपका सारा डेटा डाले, फिर आप दोबारा से ये काम करना। तो ये मसला अच्छा एफटीएम के साथ क्या होता है? एफटीएम जो है ना वो ये नहीं बताती कि आप मेरे साथ लाइन ऑफ साइट पे एक्सेस पॉइंट को नहीं पता चलता कि आप मेरे सामने बैठे हुए हैं या आप दीवार के पीछे से बात करें। जब दीवार के पीछे से बात करेंगे तो वो फिर सिग्नल मल्टीपार से बात करें, लेकिन डायरेक्ट पास का उसका बड़ा काम है, लेकिन मल्टीपार से ये 2 मसले हैं इन दोनों टेक्निक। तो हमने इसके ऊपर काम किया है, हम इसको किस तरह से रिजॉल्व करें। हम क्या करते हैं, इस तरह से मैप लेते हैं जो आपको ब्लैक कलर, तो उसमें जो दीवारें हैं उनको हम वाइट लाइन से ड्रा करते हैं, तो जो फ्री स्पेस है ब्लैक कलर से उससे हमें ये सर्च पॉइंट का ना एक मैप में आपको दिखा जो हमने जनरेट किया। टेक्निक हमारी क्या है, हम क्या करते हैं कि कंप्यूटर पे बैठ के तो उसका जो इन्वायरमेंट है उसका मैप लेके, तो उस एक्सेस पॉइंट की लोकेशन से लेके ये जो हमारे इन्वायरमेंट है मैश में डिवाइड है, तो उस हर मैश के एक सेल के अंदर तक हमने उस लाइन के नीचे जो पैटर्न होगा जो कि आपको नीचे नजर आ रहा है 0 0 में स्पेस 55 इसके अंदर दरमियान में एक वॉल आउट स्पेस है, फिर 120 से मुराद ये है कि ये एक वुडन वॉल है। इस तरह से हम ये लाइनें लगा देते हैं और उसके बाद उस जगह की जो वैल्यू है वो हम अपने एक मशीन लर्निंग मॉडल को दे देते हैं, तो वो तो इससे हमें वो एस्टिमेट करके बता देता है कि इतने फासलों पे इस पैटर्न पे आपके पास ये सिग्नल, तो इसको यूज करते हुए हम इस तरह से जो है वो हीट मैप हम उसमें अपनी पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड करते हैं। जैसे मैंने कहा 44 वाली कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सर्कल टाइप की लगता है। इस तरह से मल्टीपल मैथ में यानी अब इन मैथ में से मुझे ये और यहाँ ये गए, फिर मैंने इनको एक दूसरे के ऊपर रखा, जब एक पर रखा जहाँ पे वो कॉमन इमेज आपको नी पार्ट में येलो कलर में मिलता है, तो वो ये बता रहे हैं कि अगर आप इस जगह पे खड़े होंगे तो एक एक्सेस पॉइंट की वैल्यू आपकी 65 हो, दूसरे की 44 हो, दूसरे की 52 हो, तो दैन आई कैन हेल्प आई कैन। तो इसी तरह हमने जो एफटीएम की प्रॉब्लम है नॉन नाइट्रोजन उसको रिजॉल्व किया। इसी तरह एक सेम इसी पर तो हमने कनेक्शन ये अच्छा है
Ahmed, who is the writer and author. He has PhD in computer science from Polytechnic di Torino, IIT, and University of Potsdam, Germany, 2014. He has more than 20 years of teaching, research, administrative and management experience. He worked in many national and international organizations, including the ICRA University, University of Central Punjab, Superior University, as well as he also served in the University of Sialkot as Pro-Vice Chancellor and Professor of Computing. He has published about 24 research papers in respective journals and international conferences, and his research work mainly focused on transforming society through digital technologies, and specifically the health informatics and mobile health applications. So we warm welcome to our online speaker, Professor Dr. Nadeem Ahmed. Now, whether my presentation is visible? Yes, sir, it is visible. Okay, right. Thank you very much, sir, for providing the chance to present my research. Today, my research, which is I am going to present, is rating and ranking of mobile health applications to enhance their usability. I am Dr. Nadeem Ahmed, currently working as Professor of Computing and Associate Dean in ICRA University, Islamabad campus. Well, we have seen that there is a lot of growth in mobile health applications in last couple of years. The annual growth rate in mobile health application is around 27%. The market size of mobile health application was around 40 billion in 2021, and it is expected that this will continue in world economy in 2030 up to 340 billion. So we have seen that the mobile health applications, they are growing fastly as it is exhibited in this graph. The reason behind the growth of these mobile health applications is that the people who are using these applications, they are feeling that it is the way that improves their patient lifestyle, and it is also helpful in providing the treatment, specifically where the hospitals are not available. We can give a lot of awareness through these mobile health applications. We have also observed that in the area of COVID-19, there were a lot of mobile health applications who were giving a lot of information to the people. But there are also a lot of problems in adoption of those mobile health applications. Specifically, there are usability barriers among the older people, and they are facing the issues regarding the visibility of different interfaces. They have a less consistency. They are also facing issues in navigation, and specifically all these software or mobile health applications, they are less mapped with the real world. People are also facing the privacy issues and so on. So we think that if the capabilities and the limitations of elderly people, they are not considered in design and development phase, then definitely the whole energy we are putting on these mobile health applications, it will be wasted. There are also some guidelines are available that how we can design better interfaces for such community, specifically how we can improve its accessibility and how we can add different kind of people by inclusivity. We have checked that and analyzed around 1,000 patient-facing health apps
And it is true that only 43% of them from iOS they were working, while only 27% of Android apps they were found useful or usable. The objective of this research is that we have identified some usability barriers, that how we can improve those mobile health applications, and then we have mapped the cost of our users on the 5-star rating scale which is available on Android store and on iOS store. Whenever you download some application, then definitely you give some kind of feedback on that 5-star rating scale. We have extracted different critical usability parameters and metrics from different usability studies, and then we have defined the taxonomy of those usability parameters. Ultimately, our contribution is that we have defined the usability-based rating scale for evaluation of the health application. And at the end, we have also checked the effectiveness of that newly defined rating scale. So in this study, we have involved 45 different users, and we have divided those users into 3 groups. They are named by groups A, B, and C. In each group, we have kept 15 users, and to each group, we have provided them 3 mobile health applications. Those applications which are mostly downloaded and which have better feedback from the users, and their rating is more than 4 on Play Store. So each group we have provided 3 applications. Like group A, we have provided them 3 apps, Rasool, WebMD, and iScience Health. And then we have defined some tasks that they have to perform those tasks in those mobile health applications. So we can check that whether the people they can effectively use those mobile health applications or not. So when they were given different kinds of tasks, we have first of all we have checked their effectiveness, that how much task which was assigned to them they could complete that task. So here in this graph, their effectiveness is available. You can see that in group A, the first group, they were using 3 applications, app A, app B, and app C. You can see that their performance in case of application A and application B is around 60%, while in case of application C, their effectiveness of the task which they could complete is up to 95%. Similarly, you can observe from here that in case of group B, they have a better performance in case of application B. In the case of group C, they have a better performance in case of application B and application C. Along checking the effectiveness, we have also checked the time efficiency of those users, as we have given them a specific time of 15 minutes to complete their task. Here you can observe that in group A, the efficiency was better in case of application B, while in group B, the overall efficiency was around 55%. In group C, it was little enhanced and it was around 65%. When they have completed their task, we have also given them a questionnaire that what problems they have felt and why not they could complete their task. And ultimately, we asked them that they should rank these applications on a 5-star rating scale. So here is the 5-star rating scale, where they have basically give different kind of rating to different applications. Now, I want that my audience should concentrate here. You can see here that the blue line is showing to application A to application 1, and the green line is showing to the application B or application 2, and the red line is showing application 3.
So just taking a reflection from effectiveness, here we have already observed that they have performed well, the group A has performed well in case of application 3, and they have not performed well in case of application 1 and application 2. But when you see their rating at the 5-star rating scale, you can observe that in the case of application 1, application A and application 2, they have given them 3 or 4 ratings, while in case of application 2, they have given it the rating of 2. So basically, this rating is found a little bit conflicting with their effectiveness and efficiency. When we have studied a different kind of literature in this regard, we have found that this 5-star rating scale is biased and unreliable. The reason behind this 5-star rating scale is biasness, that many developers and stakeholders, they basically show new apps with the maximum positive feedback. They are also using their personal relationships to motivate the people to their circle that they should provide a positive or negative rating. Similarly, the people they are basically getting their inputs from different kind of articles, newspapers, sports, politics, and religious activities. So this is also affecting the rating of application. Similarly, we have also found that some people they are using fake accounts, fake identities, phishing scams, and viruses to enhance their rating. Different kind of applications, they are providing continuous pop-up messages to the users that they should give them a better rating. When we have analyzed the questionnaire which was given to the users, that what are the problems they have found in these mobile health applications, there were around 41% users who found that in these applications the data is not accurately reflecting. The 7% users, they found that the login process was not comfortable and they were unable to easily log in into this system. Similarly, the 23% more users, they have navigational issues and some other issues regarding data security and privacy. So, we want to extract some parameters which are important in designing these mobile health applications. So what are important usability parameters? We have extracted them from different studies. We have collected our usability parameters from well-established 13 articles which are written that these usability parameters are important when you are going to design your software or your website. So the important articles like 8 golden rules of designing interfaces, and similarly the Apple company, they have given some usability parameters in human interface guidelines. So we have extracted different kinds of usability parameters. There is a researcher that is called Kim and his team. They have extracted 167 parameters for designing good interfaces. With the help of experts in the field, we have collected most important and effective 25 usability parameters. Some were duplicated, some were basically in the word, they were synonyms to the others. So ultimately, we have finally collected these 25 parameters and then we have divided them into 5 different classes. The class of functionality, efficiency, satisfaction, aesthetic, and data accuracy. With the help of these 5 classes, basically we have developed the usability-based rating scale, and it has around 10 questions from each class, of this usability parameter. We have basically tried to make 2 different questions
We have aligned it with the worldwide usability scale which is available, that is called system usability scale. So on the pattern of that system usability scale, we have defined two questions from each class, but we have kept it open and left it on the developers that if they like, they can take three questions from each class, and if they like, they also can take 5 questions from each class. So the users will basically rate these questions on strongly disagree to strongly agree on Likert scale, and overall the score from this questionnaire will be 50, and then it will be divided with 10, and the star rating will be assigned automatically. The user will not give any star rating. Basically, they will fill this usability based rating scale, and ultimately the star rating will be assigned automatically. In the second stage, basically we have collected again 45 different kind of users. We have involved them in our study. We have provided them again those mobile health applications and asked them to perform different tasks on those applications. Here you can see that in second section, in our second session, what was the effectiveness of users. Here you can observe that the user effectiveness was better in the case of application, second application and third application, when we talk about the group A, when we talk about group B, their effectiveness or task completion was better in case of application B, and when we talk about the third group, their effectiveness was better in case of application C. Similarly, we have showed their efficiency, that is how much time they have completed their task, and then we have provided them this questionnaire. This questionnaire we have basically developed, and it is called usability-based rating scale, and they have told us that which application is performing better and which is not performing better. When we have converted it automatically into the star rating, so this was the star rating which is basically assigned automatically. Here you can see that the users, the star rating is given good to the second and third application in case of group A, and when similarly you talk about the group C, the well-performing application is application 3. So this star rating was exactly aligned to the user's effectiveness and the user's efficiency. So coming towards conclusion, the 5-star rating scale is basically known as a blind rating scale, and it provides no clue that why users are comfortable or they are disliking some kind of application. Similarly, this 5-star rating scale also provides no clue that which feature of the application we can enhance it or we can improve it. On the other hand, the questionnaire which we have developed, usability-based rating scale, it exactly points to the weakness of an application in different 5 categories. This detailed questionnaire not only shows user satisfaction level, but also provides some important parameters that are highlighted and which need real attention of developers. This newly developed rating
because it's the updated variant of the predictive machine learning is the predictive machine learning. Actually, I proposed this algorithm in 2020, approximately 2 or 3 years ago. Okay, predictive machine learning is the way to train AI model without anyone saying or touching your data. Predictive learning is also known as the collaborative learning, in which each client trains its data on local machine and then it transmits the trained model based to the server. In traditional AI approaches, each client transmits data to the server and AI algorithm use that server side to train the machine and use for real-time application. It consumes too much bandwidth. We know that the bandwidth is limited, it's not infinite. And data privacy is another issue. Instead of that, in predictive machine learning, each client trains itself on its own data and shares the trained model based to the server. And in server side, we use some aggregate model to make a predictive machine learning algorithm, and that predictive model used for the real-time application. And in here you see that the graphical model of the predictive machine learning indicates that each client have its own local data, and especially in medical domain and some AI business companies have their own private data which not comfortable to share that data with the others. In that case, okay, we say that okay, you keep your data and just train your model on your local data and just to share your base. And maybe if data is in GBs, terabytes, if it transfer that data, it takes too much time. Instead of that, when that organization share only base maybe take only KBs, okay, in KB and they transmit it, there is some corrupt weights, then we can easily transmit our weights. And server end, we separate those local trained models using some aggregate model with algorithm or method we will show you later, and then we use for that predictive model for the real-time application. Okay, this is the mathematical model. Mathematical is very important because first we create a mathematical model, then we simulate this mathematical model using any tool or any language. In here, you can use any model. If we forward, I use the neural network model. You can use form of optimization networks, genetic algorithms, differential evolutionary, ununique. It's up to you. But I use the neural networks architecture. In here, ST represent the input data, A represent the AC. It means client data of A client data. A means weights between the input and inner layer neuron. EF means the input layer neuron and F inner layer neuron of the client I. And W represent the net of the that client and F hidden layer neuron. Then we calculate the output layer neuron, and then we calculate the error, which represents the F error of each client. In here we can use different mathematical formula like mean square error, mean absolute error, but later equations can be changed with respect of this mathematical formula. In here I use minimum mean square error, and I have derivations regarding to that. Then the main thing, that is our feed forward scenario. Then in neural network, the second phase is the back propagation. Back propagation, we need to update the weights between the hidden layer, output layer and hidden layer, and then hidden to input layer. Then here the two matrices, change in A and change in B. That is a matrix which contains the whole matrices, but in last two lines, just I show the scalar values of the each weight between each client weight between the output and hidden layer to output layer. In here, the previous, if you see that, if I am talking about the change in then we choose the chain rule. In here, we apply the chain rule. After applying the chain rule, we write these equations, and after simplification, these are the final two equations which we use for updating the weight between the output layer and the hidden layer neurons, and as well as the weight between the hidden layer and output layer neurons. In here, then we represent the learning rate, which must be okay, this is a pseudocode of the ith client of the FML, and here you see that the client training algorithms with two matrices, and how many data we split the data, then evolves, and then we calculate the views which is shown in the previous, then X, then we calculate the weights
that we calculate the change in weight between the output and hidden layers, then input and hidden layers, and then we update the weight using the equation which I showed in the previous slide. And this algorithm, this is execute up to your number of epochs are achieved all your required criteria. So to predict the number of epochs are to meet the required accuracy, whatever you want. Then it will run the optimal weights of input and hidden layer, new layer weights, and the weights between the hidden layer and output layer. This represent the A and B of each line. Then we talking about the server side. This is proposed by me, and I use only 3 clients for the simulation purpose. So CL1, CL2, and CL3. Even if there is a different variant of the first matrix is that return the client returns the matrix with dimension D1 into D2, and similarly trying to return the dimension of matrix which is dimensions D2, 3, and D4. Similarly, the third client in which I use state conjugate way from neural network which returns matrix with dimensions D5 and D6. Now, there are 2 cases. Number 1 case is we know that if you want to add the number of matrices, then number of matrices, number of rows and columns must be equal. If these are not equal, you're not able to add these matrices. So here the case 1, all matrices, rows and columns are same. Okay, well and good, you can add easily. But the case 2, maybe each algorithm have different dimensions. Then first you need to equalize the dimension of each matrix. So these are the mathematical formula which I use, and I concatenate the 0 matrices with that. In here, now I'm working, you can use the PCA for the reduction of the matrix size as well. Now these days I'm working with that side, but it's addition in there we just prevent the zero. Definitely the complexity is high as compared to the PCA. So now I'm moving to one of PCA. Okay. In here, calculate the input weights between the input and layer of the client 1, client 2, and client 3, which is equal to the L and P and C. In here you see that I use the weighted predicting. In simple predicting machine learning, you give the equal weights to each client. But as you know that if client 1 have got 10 terabyte data, but client 2 have only 1 GB data, and client 3 have 10 GB data, definitely the algorithm which stays on 10 terabytes and the more learn more pattern as compared to data which have only 1 GB data. This means give more weightage to that client as compared to another one which have less data. So this is the weightage predictive except it depends upon your data and the client accuracy. Other this is the one of the parameters which I discussed here. So I use these 2 algorithms to aggregate and make a predictive server machine learning, which I use for the real-time prediction. This is a pseudocode in here. Again, I use the feed-forward neural network. We can use one any of that algorithm. In here, just we use for the prediction. There is no bad propagation. There is no training methods. Training only at the client level. Server end, but just we use the prediction. There is no training. So that's the thing you see there. We just predict the print the patterns. Now I consider in my title, you know that I'm discussing about the real-time application. In here, I consider 2 real-time applications for application. Hybrid Rasool is the funding project of our Township which we completed last year. And this is a graphical model of the hybrid Rasool, which is the graduation of the AI department. I am from the AI department and simulate and create this mathematical model and data collection, all those parts done by the mechanical department. And in here it shows that the multiple real-time, these are the real-time pictures where we acquire the data, then we try to whether the big aggregate models that we store on a cloud, we can store on a server or something, then we take a real-time data and import that model and give input, and then it predict into a tree. This is the turning classification, whether this energy given the hydrogen storage which is stored is used for the houses, for the industry, for the gas stations. There is a 3 type of application which is shown in previous slide. And simulation does show that the class with accuracy of our machine learning, which shows that the low class achieved accuracy 95%, in middle class 99.9, and the high class 96.4. In here, the 1.2 is why the middle class achieve more accuracy because in our data set. Like in that set, medium instances are more high as compared to a low and high. That's why that's the not a balanced data set.
That's why it gives more accurate results from the meeting class. And this paper is already published in top. Learning. This is here to integrate the whole hospital, which is clearly shown that each hospital has a local database and we train different algorithms used for the each hospital, and it's just trained a model based on that local data, and then it transfer only the training base. And in server, and we just make an aggregate model which I showed you in the this is the complete proposed model with the real-time application. We will apply this one and just take it. These are the results during training phase at each client. As the previous slide, we observed that there is a 4 clients, H1 to H4, and this is showing the accuracy and other special parameters as specific negative, false, predictive, false, positive, and so on, and with respect to each client. And in here, you see that the accuracy of the hospital was 93.7. This is written in 0.01, like a probability when you multiply by 100 to get the accuracy percentage. So hospital one accuracy is 93.75, hospital to 94.77. Each hospital could have different data. And then when and this is the training accuracy of each client. Then we also validate the client, because if there is some outfitting, underfitting, must we solve such kind of issues, then we transmit the weights. So these are the validation weights of each client side, so which shows that the client one achieved a 95% accuracy validation weight, and hospital 2 achieved 93.5, hospital 3 96.5, and hospital 4 achieved 94.5. After that, we transmit these weights to the server and we make an aggregate model using the previous mathematical equation which I showed to you. And after that, it shows that in validation phase of the predictive server, it achieves 97% accuracy. Why it is? Because a hospital will make a more accurate prediction in particular class 1, and maybe a H2 give the more accurate result as in class 2 instead of class 1. But when we make an aggregate model and with different weighted predictive weights, it incorporates all the properties. That's why our proposed model is more accurate result in all the classes, most of the classes. And this accuracy is 97%, and sensitivity 98 to 4 and so on. This is a comparison of our proposed model in health. I think two of my this is from my side. Thank you. Now I'm going to invite the last speaker of this session, Dr. Abrar. He is an assistant professor in the Department of Creative Technology, Study of Computing and Artificial Intelligence, Yale University, Islamabad. He has completed his doctoral degree in software engineering from Beijing University of Technology, China. He is a regular member of IEEE and contributed with 60
plus research articles as well, reviewed international journal and conferences. He is the editorial member and reviewer of various journals including IEEE Access, MDEI, Applied Sciences, Mathematics, etc. And his research interests include image processing, social media analysis, medical image diagnosis, machine learning, and data mining. And today, his topic of discussion will be the role of AI in healthcare, hope versus hype. So let's warmly welcome Dr. Azam. Well, the title itself suggests that hope versus hype, artificial intelligence in healthcare. So obviously the hope is we are actually expecting that AI could be able to diagnose, to actually help us to assist the professional doctors in the diagnosis of any kind of disease. But hype is something that actually indicates that AI has already done all the parts of like the diagnosis and some kind of assisting in the surgeries. But the real picture is that if we talk about the one visit, if we see that there are the various part of the method imaging modalities or imaging technologies are actually evolving. We can see that we have the technology for MRI images, we have the technology for X-rays, but on the other patient, still the doctors are basically using those X-ray images manually to perceive that what is actually those pattern indicates in that X-ray. So to some extent, we have covered the one part that we have the advancement in the technology, but the other part is that we still are working to actually be evolving the algorithm so that we can be able to replicate, not actually replicate, to assist the human or the doctors so they can be simply give the input, and based on that, all those patterns can be manually being explored from that. So there are some thoughts about AI, that AI is the new electricity that is stated by Henry Engine. And what is actually artificial intelligence? In a simple word, we say that artificial intelligence is something that can actually be used to simulate or to mimic the human intelligence, and that is the basic concept of AI. And as per the timeline, the AI was initially started in the 1950s. And the process goes on, and then the concept of machine learning and deep learning were evolved. So currently in 20s, we are working on deep learning and some research algorithms. So AI can be broadly classified based on its ability and based on its functionality. Based on its ability, it can be categorized into weak AI, strong AI, and super AI. Weak AI simply suggests that we can have any algorithm for any specific task. Like we have the algorithm to detect the cancer disease, it can be like specifically perform that disease. But the general AI, we are heading toward the general AI. Currently, we are giving the graph weak AI, that is also known as a narrow AI, and general AI, that is the strong AI, that actually uses the concept of transfer learning, that one algorithm can be able to use for any kind of the disease diagnosis. Like if we basically build an algorithm for cancer disease, so that algorithm can be strong enough that we can use for some other diseases like diabetic retinopathy, etc. And super AI, that is actually the goal of 2060, that without any kind of specific data or this is kind of a thing that is actually going to perform to mimic the human intelligence exactly as the human do, but in some cases it should be able to perform better than the human. So that is actually the vision 2060. And based on functionality, it can be either interactive machines, then we have the limited memory, theory of mind, and self-awareness. So it currently, like we are living in the age of narrow AI, that is the weak AI. About 2040, we will be able to replicate the concept of strong AI, and the vision of 2060
industry itself indicates that we are heading toward and we are moving toward basically the super AI. AI in healthcare is used in various forms, like it can be used for patient facing, for telehealth, for doctor facing, for smart devices, for smart health assistant, for the drug discovery, and various diagnosis of the disease. And if we talk about its startup, its future perspective that how AI can capture the market. So currently, around $600 billion are invested, particularly for AI in healthcare. And in 2030, it is about to reach around 16 billion, 16,000 billion, which is around 100 times greater than as per the date, as per today's. And if we talk about its with respect to geographical location, currently in North America only there are around 57% of the startups are based on only AI in healthcare. So what that actually suggests that that physician can basically use those algorithms. They are able to input the image, and based on that, they can be able to diagnose any kind of the diseases. So this is how it can work. That we have the inputs, like we have the symptoms for various patients, including its chest pain, its biochemical analysis like urine and blood test, and we have some other demographic features like its age and gender. And based on any kind of machine learning or deep learning algorithm, they are going to perform the diagnosis whether a person is a normal or abnormal. So obviously, if we talk about its inevitability, so we have the data and we know that data itself, some stats say that around 98% data is basically in the form of unstructured, and we have to basically make it structured in that way that we can simply use in the algorithm, and then we can basically perform any kind of analysis. So this is how actually different demographic features are used as input, and based on the different data analysis and machine learning based algorithm. So in combining that is AI based algorithm can be able to provide us a personalized health prediction. Obviously, we have the various benefits if we use AI in healthcare. Based on this, we can have a fast and accurate diagnosis. We have the reduced human error. We can actually reduce the cost by visiting the doctor. There is no need. We can actually take the help from the remote location to provide a virtual presence as well. So this is actually this is all about the hope, and hype is something that how it is undermining the uptake of AI. It actually indicates that hype is rampant, so it means that it can lead to an unrealistic expectation because someone has been falsely classified or falsely stated that AI is going to replicate the human, or AI has already provided the most accurate solution. But these all of the things are only falsely classified or falsely labeled things. Most of the tech companies or most of the medical itself hospitals, they just to promote their medicines or just to promote their drug, all kind of the drugs, they only to produce or selling and misleading marketing. They have just provided all these kind of hype. So obviously press is guilty too, because based on the realistic pictures, they have actually created a hype, and that hype is not true as per the different stats. So obviously, if we talk about the healthcare industry in Pakistan, government of Pakistan is already taking some initiatives, and definitely the positive side is that they use those kind of algorithms to diagnose issues more accurately and quickly. They can identify the patient at high level of the risk, in particularly developing certain diseases, and improve the efficiency of the healthcare. But there are some key challenges, particularly in Pakistan, that we have the limited availability of healthcare data. Data is itself private, so we are not being able to access the data. The quality of healthcare data is not as up to the mark, and obviously some shortage in the skilled AI professionals. AI can be actually used in various type of like radiology, anthropology, surgery, ophthalmology, anesthesia, pharma industry, dermatology. So obviously, AI is going to use to diagnose any part of the disease that is actually been existent in the human
also used for the insurance industry. Some of the tech companies in the world, biggest corporation are already investing on healthcare, including IBM, Rauf Azam, Facebook, Microsoft, Amazon, and Apple. And some key startups that are actually being employed all over the world, and these are broadly classified into imaging and diagnostic, drug discovery, predictive analytics, and some genomics and fitness. So these are the key areas here that, and they are actually there are a lot of investment has been done on these startups. So what are the potential challenges in the healthcare market? That we have the high initial capital requirement to start any kind of the basic AI startup. We need a high capital, and definitely we have to actually prioritize the increase in employment, and then we have the difficulty in the deployment because we have to face various federations from the drug discovery or direct authority. So obviously we have the lack of curated healthcare data, and these are the different stats that still 47% people assume that if AI is being actually applied, so they can provide us the assistance up to 47%, and there are some different disadvantages or the cons, particularly for AI in healthcare, that AI, everyone don't want to disclose their data regarding the patient privacy. There are some key concerns, and even though there is one Patient Privacy Act with the name of BIPA is already being applied, so obviously lack of the healthcare data, high initial capital investment, lack of interoperability, and these are some key concerns. So what are some key takeaways that you always look for a rapid increase in AI use by the hospitals and the different tech companies over the next 20 we are able to basically have some various AI-based firms that they are going to invest in, particularly for healthcare. And there is a reason for optimism that advances in AI architecture and informatics are already unfolding, and various federal drug regulatory authorities, now the frontier clinicians will be able to keep up with the pace unless we have to be focused and vigilant with respect to the latest innovation that are going to be basically evolved. And along with that, even we have some private AI developers, we will get a clear picture of the winner and loser, so we can assume that AI is some AI in healthcare, particularly going to provide us the ease specifically for those medical experts or those for actually working in so that's all from my side. Thank you. No, sir. No, sir. That all was very good. All Dr. Rauf Azam for concluding remarks of this session. तालियां बजाना शुरू कर। Sir, big clap for you. आस्ताने पे बुलाना।
Professor Dr. Little for the online. Yay! Now I would like Dr. Vikas Hetal Khan Bangyal to speak on now I would request Dr. Muhammad Usman Thank you, sir. On behalf of Dr. Muhammad Abrar Khan, who is the only speaker, I request Dr. A.D. to receive I would like Dr. A.D. to Say something to us. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मॉर्निंग में इंतहाई परेशानी थी कल, और आप फेस के एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं कितना खुश हूँ सब आप लोगों की वजह से है, आप स्टूडेंट्स की वजह से है, और हमारे इनवाइटेड और 3 गेस्ट स्पीकर्स थे, उनके बिहार पे एक सक्सेसफुल जो है उनके कॉन्फ्रेंस करवाई नीचे कर हैंडल से नीचे कर। कुछ सर्टिफिकेट्स हैं हमारे पास, एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स, तो मैं वन बाई वन को कॉल करता हूँ। हैंडल से नीचे वीडियो बनाइए यार, आगे ये तो विलन है यार।
जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। नहीं अब तो चुप करके सुन ले। दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला सांप से खुद सजा उसको दिखा क्या वीडियो दिखाई, उष्मा को क्या वीडियो दिखा। बस में कोनन पहले सजाई गई, बस में कोनन पहले सजाई गई, फिर तेरी जात मंजर पे लाई गई, फिर तेरी जात मंजर पे लाई गई। सैयदुल अव्वलीन सैयदुल जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। यार हम तो बोल दें। Now I request all members of Student UEIT Society to come on stage. Come, all students.
Naseem, Ali Assaf, Fadia Parihan, Abdul Moin Sadra, and all the members were Mandi and Parihan. I don't have the name of complete list. Can you come please forward to have a photo? Give them a huge round of applause because without them this event was impossible. They have worked a lot whole week. I request Dr. Abrar Hussain to please join them on stage and Dr. Shahid. Dr. Shahid and Dr. Azam come on stage. And Dr. Chancellor. We should appreciate this team because they have worked a lot, day and night. उनको जगह नहीं मिली फोन आया तो पूछे And I again request Dr. Usma and Ms. Faiza Tariq to join them. I'm not very... These students have worked a lot. I think we cannot thank them in any word. वीडियो तो दिखाना अपने मोबाइल में सारी वीडियो बनाई थी हाँ और ना अब नहीं बनाई मिस हो गया था हाथ से बटन ही सीधा दबाना जा सर तेरे से उम्मीद यही थी यहाँ देखो तो की बैठ गया नहीं ये सोसाइटी की रहा उसकी हम भी आते थे पहले थे वो तो मैंने भी रोज इसकी एक वीडियो बना पिक्चर में नहीं वो सर उसने कहा था वीडियो बना दो After majority is requested to please come on stage. बेल्ट रहेगी थी या तो को तो की पड़ी
come here and join us in a photo. These are exquisite as well as a very good member of different committees. Postal and Transportation Committee. Give them a huge round of applause. Please. नीचे आप स्टेज दो वाली नहीं देंगे, नीचे वाली जो आपके अकाउंट में लिखे हैं। I request Dr. Usman Ali to please come on the stage and say something about this conference. But I keep quiet, silent man. Thank you. वालेकुम अस्सलाम। साइलेंट करो यार बकवास। ये आपको अंदाजा नहीं है कॉन्फ्रेंस के साथ आप तमाम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में शुमार है आपका, जो कि अपने इंस्टीट्यूट है, अपना इंजीनियर है, उसके अंदर ये कॉन्फ्रेंस अभी चूँकि आप जो है वो अंडरग्रेड के हैं, आपका अंदाजा ये तो कॉन्फ्रेंस 100% ऐसे ही ये आपको यकीन होगा। लेकिन ये जिस जगह आप बैठे हैं वहाँ तो हजारों डॉलर पे करके आगे बैठे हैं और वो एक एक मुजफ्फर फूल है उसको सुनते हैं। मैं इसलिए कांग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू कि आपको बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल इवेंट जो है वो तेरी वीडियो नीचे वो अपने आप ऑटोमेटिक एक्सेस जाएगा, वैसे सेव भी कर ली वीडियो बनाई है। तो एक और बात मैं भी ये दाऊद यार, दाऊद पानी मंगवा ले यार, ये पी ले। A great scholar once said,
अंडरस्टैंडिंग है जो आपको कल जॉब मिले, क्योंकि कल आपने जब कहीं इंटरव्यू के लिए जाना है तो वहाँ आपने ये नहीं किया है मेरा कोर्स किया है मेरा इसका नाम है ना वो प्रिंसिपल है जैसी प्रिंसिपल जैसी प्रिंसिपल उसका नाम मुझे याद है बात ये है कि हम जब इंटरव्यू करते हैं तो एक दो क्वेश्चन में हमें पता चल जाता है ये तो मेरी आपसे ये अगर हमें गलती है हमें बात तो आज के आपके पास मीडिया को है तो वही वर्ड याद है वो याद है उसका करस्पॉन्डिंग ग्लोबल फैक्टर्स में या एक्टिविटी से पूछने अपना कंसेप्ट को एक बात है अच्छे से बात आप जैसे स्क्रीन टाइम होने के बाद समझ आ जाएगी बच्चे टॉप पे रहते हैं आप 6 माह में उससे आगे होंगे और 5 पे तो लिटरली सिर्फ और सिर्फ आपके इंटरव्यू पे होगा और इंटरव्यू में वही सक्सेस होता है जिसके पास नॉलेज अपनी जो बड़े समझने बड़े आजकल लोग कॉपी पेस्ट कर जाते हैं ऐसे नहीं कहानी नहीं चलने वाली और इवन जब चैट से कॉपी पेस्ट करते हैं चैट पे गलत लिखा होता है एकदम पढ़ क्या करें सब पेस्ट किया जो कह रहे हैं वो है all of you best of luck for your माहीन बच्चे आप आ गए थे एक कामिया ने आप देखिए बैक लग में ना उतारी अभी चल रहा है बेटा हमारे गेस्ट हैं वीसी ऑफिस में आ चुके हैं अभी मुझे कॉल आएगी कि वो वहाँ से निकल रहे हैं तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा तो आप लोग खामोश रहेंगे जैसे मॉर्निंग में आप लोगों ने किया कल वैसे ही हमारी एक्टिविटी होगी 2-3 छोटी स्पीचीज़ हैं और ये स्पीचीज़ एप्रिसिएशन स्पीचीज़ हैं यहाँ पे कोई लेक्चर नहीं है जो आप सुन के 2 दिन बोल रहे हैं यहाँ पे आपकी स्पीचीज़ है वो एप्रिसिएशन है आप लोगों की और आपके टीचर्स की तो डेफिनेटली आप लोग बोर नहीं होंगे तो छोटी छोटी स्पीचेज हैं 2-2 मिनट की 3-3 मिनट की उसके बाद सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन है तो एट द एंड फैकल्टी और हमारे गेस्ट की जो है वो पिक्चर होगी और उसके बाद अल्लाह हाफिज़ के लिए 2 लाइनें कही जाएंगी तो आप लोग पहले चीफ गेस्ट जो हैं उनके लिए रास्ता रखेंगे और बाहर निकलेंगे फिर आप लोग अपनी चेयर छोड़ेंगे जो हमारे चीफ गेस्ट हैं वो यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के वाइस चांसलर हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब वो आए तो प्लीज़ आप खड़े होकर उनका इस्तेमाल करें क्योंकि लास्ट टाइम मैंने देखा था कुछ स्टूडेंट्स बैठे थे खड़े तो जैसे ही वो अंदर आते हैं जब तक वो बैठ नहीं जाते आप सब लोग खड़े होकर जो है वो उनको वेलकम करेंगे इज माय रिक्वेस्ट इज इट क्लियर यस मैम थैंक यू
Hussain.
المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم मुआज़्ज़ज़ सामीन किराम, मैंने आप हजरात के सामने कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की सूरतुल हश्र से चंद आयात की तिलावत की, जिसमें अल्लाह रब्बुल जलाल इरशाद फरमाता है, वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, हर गैब और ज़ाहिर को जानने वाला है, वही निहायत मेहरबान बहुत रहम वाला है। वही अल्लाह जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, बादशाह निहायत पाक, सलामती देने वाला, अमन बख्शने वाला, हिफाजत फरमाने वाला, बहुत इज्जत वाला, बेहद अजमत वाला, अपनी बड़ाई बयान फरमाने वाला। अल्लाह इन मुश्रिकों के शिर्क से पाक है। वही अल्लाह बनाने वाला, पैदा करने वाला, हर एक को सूरत देने वाला। सब अच्छे नाम उसी के हैं। आसमान और ज़मीन में मौजूद हर चीज़ उसकी पाकी बयान करती है, और वही बहुत इज्जत वाला, बड़ा हिकमत वाला है। It is with great pleasure that I introduce our esteemed chief guest, Professor Dr. Khalid Mahmood, Vice Chancellor, Punjab University, Lahore. Professor Dr. Khalid Mahmood stands as an ambitious, energetic, and renowned figure in the field of library and information science in Pakistan and beyond. Having successfully completed his HEC-sponsored postdoctoral research at Department of Information Studies, University of California, Los Angeles, Professor Dr. Khalid Mahmood boasts a wealth of knowledge and expertise. With over 100 research papers published in national and international journals, he is prolific contributor to the academic discourse. Furthermore, he serves as the chief editor of the esteemed scholarly publication, the Pakistan Journal of Library and Information Science. Please join me in extending a welcome to Professor Dr. Khalid Mahmood as he graced the stage to share his insights during the address at Rexit 2024. Please welcome. उम्मीद है कि आपने 2 दिन जो है वो यहाँ पे खूब आपकी लर्निंग हुई।
और इस तरह की कॉन्फ्रेंस और भी होती रहे और आखिर में फिर शुक्रिया और आपकी जो अनटायरिंग एफर्ट है। मैं ये सोचना था कि हमारा ये जो फील्ड है कंप्यूटर साइंस का, इसमें इश्यूज क्या है। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो हम लोग पिछले कुछ सालों से जो QS कीवर्ड रैंकिंग है सब्जेक्ट की खास तौर पर, उसमें हमारा जो कंप्यूटर साइंस का शोबे है, हमारे पास 4 शोबे हैं खालिसन जो कंप्यूटर साइंस के फील्ड से मुतल्लिक़ हैं। फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर हम लोग US में रैंक भी कर रहे हैं, पाकिस्तान की चंद यूनिवर्सिटियों में शामिल हैं कंप्यूटर साइंस के फील्ड में। तो मेरी अपने जो मेरे वहाँ प्रोफेसर हैं उनसे भी डिस्कशन होती रहती है, और उसके अलावा जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के हमारे दोस्त अहबाब हैं कंप्यूटर साइंस के फील्ड के, उनसे डिस्कशन रहती है। तो एक तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान में जो फील्ड्स में सबसे जो बेहतर जा रहा है जॉब के हिसाब से, स्टूडेंट्स का जो इंतखाब है उसके हिसाब से, तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट। मतलब हम इसको कंपेयर कर सकते हैं कि MBBS के साथ, और मैं कई ऐसे स्टूडेंट्स को भी जानता हूँ कि जिनका MBBS का मेरिट आया लेकिन उन्होंने छोड़ के कंप्यूटर साइंस को ज्वाइन किया। हमारी यूनिवर्सिटी में भी इस वक्त बेस्ट मेरिट है FSC के बाद, जो बेस्ट मेरिट आता है अंडर ग्रेड लेवल का, तो नंबर 1 पे जो है वो कंप्यूटर साइंस के हमारे 4 शोबे। तो सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि आप में से, आप लोग ज़ाहिर है आप में से अक्सरियत जो है वो कंप्यूटर साइंस के ही तालिब इल्म हैं। तो कंप्यूटर साइंस का जो आपका इंतखाब है ये आजकल के दौर के हिसाब से ये बेस्ट इंतखाब है कि आप लोग एक ऐसे शोबे में आए हैं कि जो दुनिया में इस वक्त नंबर 1 पे जा रहा है। लेकिन जब आप ऐसे शोबे में आए हैं तो इसके साथ साथ कुछ चैलेंज भी हैं जो आपको फेस करने पड़ते हैं। मतलब मैं पिछले दिनों हमारे वहाँ पे एक कैरियर इवेंट था, जॉब आप कह लीजिए, जॉब फेयर कह लीजिए, कैरियर फेयर इसका नाम था। तो वहाँ पे इंडस्ट्री आई हुई थी, तो मैं वहाँ पे अपने विजिट के दौरान मैंने इंडस्ट्री के कई लोगों से पूछा कि क्या चैलेंज है। तो सबसे पहली जो चीज़ सामने आती है ना वो ये आती है कि इतनी तेज़ी से तब्दील होने वाला फील्ड है। शायद कोई और फील्ड ऐसा नहीं है जिसमें नॉलेज जो है और जो स्किल्स हैं और जो टूल्स हैं वो इतनी तेजी से तब्दील होते हो कि सुबह आप कोई एक लैंग्वेज यूज कर रहे हैं तो शाम को आपको पता चला कि नई लैंग्वेज आ गई है, और उस एक लैंग्वेज के अंदर भी इतने अपडेट्स हैं कि उसको उसके साथ चलना, उसका साथ देना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। तो वैसे तो जितने भी प्रोफेशनल फील्ड होते हैं ना, मेडिसिन हो, टीचिंग हो, ये एडवोकेसी या वकालत का शोबा हो, या और भी जो एग्रीकल्चर या इसके अलावा प्रोफेशनल फील्ड होते हैं, उसकी निशानी यही होती है कि उसमें आपकी जो एजुकेशन है वो मुसलसल जारी है। अगर एक वकील को जो है वो नए आने वाले कानून का ना पता हो तो अपने केस अच्छे तरीके से प्रिपेयर नहीं कर सकता। अगर एक डॉक्टर को नई आने वाली मेडिसिन का ना पता हो वो सही तरीके से इलाज नहीं कर सकता। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज जो है ये नई एडवांसमेंट्स का, वो कंप्यूटर साइंस के शोबे में है। तो हर वक्त एक मुकाबला है, एक दौड़ है जिसके अंदर कंप्यूटर साइंटिस्ट जो है वो लगा रहता है, और अगर थोड़ी सी उसने जो है वो चूक की, थोड़ी सी उससे भूल हुई, थोड़ा सा उसने रेस्ट करने का सोचा तो बाकी दुनिया आगे निकल जाएगी और वो पीछे रह जाएगी। एक तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है। दूसरा फिर इसी चैलेंज से रिलेटेड ये है कि ये जो टेक्नोलॉजी आ रही है उसमें से कौन सी टेक्नोलॉजी को फिर एजुकेशन के लेवल तक लेके आना है। तो ये भी डिस्कशन मेरी उस इंडस्ट्री के लोगों के साथ रही कि भाई वो जो टेक्नोलॉजी नई आई है वो करिकुलम में कब लेके आनी है। वो कहते हैं जी बहुत बड़ा चैलेंज है, टेक्नोलॉजी मार्केट में आ गई, जब हम नए बीएस पास स्टूडेंट को पकड़ते हैं वो कहते हैं मुझे दुनिया नहीं, क्योंकि मुझे पढ़ाई नहीं गई।
तो ये खुद एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि क्या नई टेक्नोलॉजी आते ही उसे करिकुलम में लेके जाना है। अच्छा, इस टेक्नोलॉजी में एक चैलेंज ये भी है कि बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो मार्केट में आते हैं और अनसक्सेसफुल होते हैं। कुछ अरसे के बाद पता चलता है कि ये मार्केट से आउट हो गया, ये सर्च इंजन नया आया, लेकिन ये इससे पहले कि करिकुलम में जाए मार्केट ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, या कोई लैंग्वेज या कोई टूल आया तो वो नहीं किया एक्सेप्ट। तो ये एक दूसरा चैलेंज है कि टूल तो है, इनमें से कौन सा एजुकेशन में लेके जाना है, स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग करनी है या क्या करना है, इसका इंतजार करना है, कितनी देर इंतजार करना है कि उसकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो बढ़ जाए, और फिर हम ये सोचें, एजुकेशनिस्ट बैठ के सोचें कि हम इसको करिकुलम में डालें कि ना डालें। इसके साथ साथ जो एक चैलेंज है वो ये है कि करिकुलम में भी चले आपने डाल दिया चीजों को, फिर ये जो जॉब मार्केट है, बच्चे डिग्री लेके जॉब में चले गए, वहां जाके पता चल रहा है कि आपको आपका स्किल छट गया है। आपने ठीक है डिग्री ली है, आपका जीपीए बड़ा अच्छा है, आप थियरी में बड़े अच्छे हैं, लेकिन थियरी को हमने क्या करना है। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज जो कंप्यूटर साइंस के फील्ड के अपने अंदर भी आ गया है, और इस ऑटोमेशन या आईटी की एप्लीकेशन जो दूसरे फील्ड में हुई है, ये चैलेंज आपके फील्ड ने दूसरे फील्ड्स को भी दे दिया है कि स्किल्स चाहिए, थ्योरी नहीं चाहिए। तो जो चीज सबसे बड़ी चैलेंज हुई है ना, वो होगा डिग्री प्रोग्राम। यूनिवर्सिटी से आजकल कहा जाता है कि 4-4 साल पढ़ाने की जरूरत क्या है, और हमें उसको डिफेंड करना पड़ता है कि बच्चे को हम 4 साल क्यों पढ़ाते हैं। पर 4 सालों में फिर ये क्वेश्चन भी आता है कि पाकिस्तान स्टडीज क्यों पढ़ाते हैं, इनको अंग्रेजी क्यों पढ़ाते हैं, इनको जनाब आप फलां चीज क्यों पढ़ाते हैं, फलां चीज क्यों पढ़ाते हैं, मैथ और फिजिक्स क्यों पढ़ाते हैं, इनको इसकी क्या जरूरत है। एक 6 महीने का इनको कोर्स कराएं, ये ऊपर ऐसे कितने में चल रहा है, सीधे सीधे टूल सिखाएं, 21 पे, इनके 4 साल आप जाया कर रहे हैं। तो एक इस वक्त दुनिया के अंदर एक डिबेट चल रही है, और ये डिबेट कंप्यूटर साइंस के फील्ड के हवाले से भी है, और मैंने कहा कि इसकी वजह से आईटी की ज्यादा एप्लीकेशन होने की वजह से दूसरे फील्ड में भी चली गई। फिर टूल सिखाएं और बड़ी अच्छी नौकरी भी मिल जाएगी, और 6 महीने में बच्चा तैयार भी हो जाएगा। तो यूनिवर्सिटियों को ये डिफेंड करना मुश्किल हो गया है कि क्या जरूरत है कि हम 4-4 साल की डिग्री कराएं। उसके लिए हमें ये मैं और आप में से कई यहाँ बैठे हैं प्रोफेसर जो कि यूनिवर्सिटियों से ताल्लुक रखते हैं, हमें इसका जवाब तैयार करना पड़ता है कि हमें क्या जरूरत है कि हम 4 साल पढ़ाएं, हमें क्या जरूरत है कि हम मैथ पढ़ाएं, कैलकुलस कितने में आए, और उसके बाद ये करें वो करें, फिजिक्स पढ़ाएं, जरूरत क्या है। तो इसको हमें जस्टिफाई करना पड़ रहा है। ये आपके फील्ड के अंदर जो एडवांसमेंट आई है ना, उसने हमारे लिए ये प्रॉब्लम कर दिया। और बात इसके हक में बड़े अच्छे दलाल आ जाते हैं, डिग्री होनी चाहिए, बात अच्छे दलाल डिग्री आते, और बीच में कोई उठता है वो वाकई 6 महीने का कोर्स करता है और सबको पीछे छोड़ जाता है। तनवीर नाडला साहब का कोर्स किया है, लाखों डॉलर कमा रहा है, और 4-4 साल जो पढ़ने वाले हैं वो उसका मुंह देख रहे हैं कि आप क्या करें। है ना मुश्किल। आपने डिग्री किया तनवीर नाडला का कोर्स, मैं वैसे भी उसका मार्केटिंग ऑफिसर नहीं हूँ, आप कहीं और से कर दीजिएगा, तनवीर नाडला का जरूरी नहीं है। लेकिन बात यह है ये साबित किया है कि ज्यादा अच्छी जॉब दी जा सकती है, ज्यादा अच्छा बिजनेस किया जा सकता है, फ्रीलांसिंग करने नई जॉब मिलती तो, और बड़े सक्सेसफुल मॉडल जो है वो हमारे सामने हैं, और 4 साल की डिग्री जो है वो चैलेंज होगी। ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है हमारे सामने। और फिर इसके बाद आ जाए, इसके बाद है कि ठीक है जी 6 महीने का कोर्स करें या 4 साल की डिग्री लें, फील्ड तो वही है ना कंप्यूटर साइंस का। फिर बात आ जाती है आपके कंपैरिजन की। मैं हमारे जो डीन है फैकल्टी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, मैं उनसे पूछ रहा था, डॉक्टर साहब इंडिया हमसे बड़ा मुल्क है, इंडिया की आबादी भी हमसे ज्यादा है, ज्योग्राफी वाइज भी हमसे बड़ा है, ये जो आईटी एक्सपोर्ट्स हैं
हम बड़ा शोर मचाते हैं कि फ्रीलांसिंग हो गई है, बच्चा घर बैठे पैसे कमाए। अखबार आज का भी उठा के देखें तो 100 स्टार होगा उसमें कि थोड़ी सी ट्रेनिंग ले और घर बैठे लाखों कमाए। तो मैंने कहा पाकिस्तान बहुत आगे निकल गया। मैंने कहा इंडिया हमसे कितना आगे है आईटी की सर्विसेज और प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट में। तो कहिए आबादी के हिसाब से तो हमसे चंद गुना बड़ा मुल्क है, ज्योग्राफी के हिसाब से भी चंद गुना है। तो मैंने कहा आईटी एक्सपोर्ट कहते हैं 100 गुना ज्यादा। आखिर कोई तो वजह है ना। इंडिया वाले हमारे जैसे नहीं होते, आधे गोरे आधे काले, है ना, गंदगी से रंग के। और बल्कि बहुत सारे तो वैसे ही काले हैं, साउथ इंडियन, ड्रेविडियन को नस्ल हो है। लेकिन वो ड्रेविडियन जो है मैंगलोर से उठता है, क्या उसका नाम है भला? मैंगलोर से आईआईटी का ग्रेजुएट है, गूगल का, और गूगल का वो सीईओ है, सुंदर पिचाई। बात ये है कि कोई तो वजह है ना कि इंडिया में जनाब बड़ी तेजी से कंप्यूटर साइंस आगे बढ़ रही है। उनके लाखों करोड़ों लोग जो है वो पैसे कमा रहे हैं दुनिया भर में, हमारे थोड़े से लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये भी एक चैलेंज है कि कम से कम जो हमारे जैसे लोग हैं उनका तो हम साथ दें ना, उनके तो साथ खड़े हो ना। हमारी पॉलिसीज गवर्नमेंट की, हमारा एनवायरमेंट, हमारी यूनिवर्सिटियों का माहौल, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो प्रॉब्लम है ना। या पता नहीं हमारे नौजवान के अंदर कोई प्रॉब्लम है। इस पर रिसर्च कीजिएगा कि आप लोग कितने बजे सोते हैं और कितने बजे उठते हैं, और उसके बाद आप किसी काम के काबिल रहते हैं कि नहीं रहते। आप जरा सोचिएगा कि कोई मसला है कि हम लोग हमारे से आगे, बांग्लादेशी हमसे आगे निकल रहे हैं, श्रीलंका वाले हमसे आगे निकल रहे हैं बहुत सारे कामों में, और हमारे जैसे हैं। रहन सहन भी उनका हमारे जैसे है, खुराक भी हमारे जैसी है, शक्ल सूरत और कद भी हमारे जैसे हैं, लेकिन बहुत आगे निकल रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे मुल्की लेवल का। ये चैलेंज है कि पाकिस्तान में ऐसी कौन सी पॉलिसीज बनाई जाए, उन पॉलिसीज को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। हमारे लोग, जब ये ग्लोबल विलेज है, हम सारी दुनिया से कमाई कर सकते हैं, हमारा ग्रेजुएट हर जगह जा सकता है। हमारे जो ग्रेजुएट बाहर गए ना, वो हमें कहते हैं जी हर जगह इंडियन बैठे, अपने लोगों को ऐसे हाथ पकड़ते हैं, आगे खींच देते हैं, और हमें पूछने वाला कोई नहीं होता। मैं पहला पाकिस्तान, बहुत सारे इदारों में, इंटरनेशनल इदारों में जब पाकिस्तानी जाते कहते हैं मैं पहला पाकिस्तानी हूँ यहाँ। 100 बंदा उन्होंने इंडिया का रखा होगा मेरे से पहले, और किसी दूसरे पाकिस्तानी की जॉब कराना मेरे लिए मुश्किल हो गया। इस पर भी सोचने की जरूरत है। तो मैं ये चंद एक सोचने के पॉइंट्स जो हैं वो कंप्यूटर साइंस के हवाले से यहाँ छोड़े जा रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि हम सारे मिल के इसके बारे में सोचें कि कैसे हमने आगे बढ़ना है। कंप्यूटर साइंस का फील्ड एक ऐसा वाहद फील्ड है जिसमें हम घर बैठे कमा सकते हैं, आप मुल्क से बाहर गए बगैर कमा सकते हैं, बाहर अगर चले जाएं तो आप बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। पाकिस्तानी अपनी सलाहियत के एतबार से तो कम नहीं है। मैं खुद गया हूँ कई मुल्कों में, मैं पाकिस्तानी मैंने काम करते देखा, बड़ा अच्छा काम कर रहे होते हैं, लेकिन क्या वजह है कि दूसरे लोग हमसे आगे निकल जाते हैं और हमारे जैसे रहन सहन वाले, हमारे जैसी पूजोपाठ वाले लोग। इन सब इश्यूज पे हमें सोचने की जरूरत है। बाकी मैं फिर आपको बार पेश करूंगा। सबसे पहले मुबारकबाद तो आपको इस शोबे को ज्वाइन करने के लिए कि आप लोग आईटी के फील्ड के एक्सपर्ट बनने जा रहे हैं। और दूसरी बात ये कि इस तरह के जो इवेंट्स हैं इसमें आप लोग शरीक होते हैं, और यूनिवर्सिटी का भी शुक्रिया, यूनिवर्सिटी ने इस तरह की इस्तेमाल किया, आप सबको एक जगह बिठाया, आपस में आइडियाज शेयरिंग की एक एक्सरसाइज यहाँ हो रही है। और मेरा ख्याल है कि इस तरह की एक्सरसाइज होती रहेगी। इशूज जैसे मैंने आज आपके सामने कुछ रखे हैं, आपने आपस में भी डिस्कस किए होंगे, तो मेरा ये ख्याल है कि इस तरह के इवेंट्स के जरिए से हम अपने मुल्क की जो तरक्की है उसमें जो है वो हिस्सा अदा करने के काबिल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। आप सबका बहुत शुक्रिया। Thank you very much, sir, for your time, valuable speech and appreciation. It is indeed an honor to extend our esteemed invitation to the worthy Vice Chancellor, University of Education, Professor Dr. Abrar Hussain, for closing remarks on this auspicious occasion.
पहले हमारे आज के टीम के चीफ गेस्ट किया आप हमारे क्लोजिंग लाइव आपने जो बातें की हैं, जो सवाल उठाए, बड़े जेन्युइन सवाल हैं और ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं, हम असादा के लिए भी हैं, हम वो लोग जो बैठे हुए हैं पोस्ट पे उनके लिए हैं कि हमने आगे क्या करना है। अभी बात हो रही थी कि सिलेबस के हवाले से ना कि इसमें इतनी रैपिडली चेंज हो रही है कि ना आप हम तो कहेंगे सिलेबस में इंक्लूड करना, उससे पहले वो कंप्लीट हो जाती है। उसका आज दुनिया में तो जो यूनिवर्सिटी कर रही है वो ये कर रही है कि ना उनका प्रोग्राम जो फंडामेंटल टाइप ऑफ कोर्सेज है वो बढ़ा दी जा रही है यूनिवर्सिटी में। बच्चों ने कहा जाता है कि आप ऑनलाइन जाएं, कोर्सेज पढ़ें, जो मार्केट की डिमांड है हम आपको उसको क्रेडिट कर देंगे। रात को बैठा बेटे से बात कर रहा था कि आपको क्या आप कर रहे हैं, मेरे 100 क्रेडिट हो गए हैं। 100 कैसे वो करें? 3 सेमेस्टर में आप अपने नॉर्मल पढ़े हो, कहता जी पाइथन मैंने फलां यूनिवर्सिटी से किया था, जो प्रोफेसर है मेरे प्रोफेसर का दोस्त मैंने काम किया था, उनका ओके मैं आपको क्रेडिट कर देता हूँ। फलां कोर्स मैंने वहां से किया था जी, मैं कोर्स से मेरा कोई क्रेडिट हो गया है। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी चेंज हो रही है, हमें भी इस हवाले से चेंज करना होगा, होना होगा और मेरे स्टूडेंट्स को बन जाएगा कि ये ना देखें कि आपको जो क्लास में पढ़ाया उसके अलावा आप था कि हमने कोई अच्छे जर्नल में पब्लिकेशन करनी है या इम्पैक्ट में पब्लिकेशन करनी है, तो ये जो और इनके स्टूडेंट्स हैं मतलब पायनियर्स और इस वक्त लीडर हैं हिंदुस्तान में जो बेस्ट पब्लिकेशन कर रहे हैं, उसके बाद यह कि उन्होंने वहां नहीं खड़े रहे तो देखा कि दुनिया में क्या हो रहा है, उनके साथ कम्पीट किया है। और ये कम्पीट करें ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान में नहीं बल्कि वर्ल्ड लेवल पे जो एरिया में लोग हमसे कर रहे हैं। अभी बात हो रही थी स्किल के वाले से, आप जब डिग्री लेते हो तो हम कहते हैं आपको हमने इंपावर कर दिया है। इंपावरमेंट का क्या मतलब है? जस्ट पीस ऑफ पेपर होने से इंपावर नहीं मतलब है कि अगर आपको मैक्डोनल्ड की गाड़ी आपको दे दी गई है जिसको आपने ड्राइव करना है, आप इंपावर्ड नहीं हुए प्रॉपर्ली जब तक आप में वो स्किल नहीं है, वो कैपेबिलिटी को आपने ड्राइव करना है। आपको ट्रैफिक के रूल भी पता हो, आपको हाउ टू ड्राइव ए कार पता हो, तो जब तक वो स्किल है आपकी कैपेबिलिटी है वो भी साथ नहीं होंगे। सिर्फ डिग्री का होना इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि उसके साथ जो एसोसिएट चीजें हैं वो भी आपका होनी चाहिए। स्टूडेंट के लिए उनके साथ हमने इंटरेक्शन करना, कनेक्शन अपने बिल्ड करना, लिंकेज डेवलप करना और कोलैबोरेशन करना। मैं कोलैबोरेशन की मिसाल यूं दूंगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट डजंट मीन कि आपने अगर आप समवन इज वर्किंग सीएस तो देखें कि सीएस में कौन कामों से कोलैबोरेट करना है। जब मैं आईटी में कर रहा हूँ, जब मैं एआई में काम कर रहा हूँ, कोलैबोरेशन आप अपने डिसिप्लिन में कर सकते हैं, बाहर भी कर सकते हैं। जितना आप क्या अपने जो कैनवस को वसी करेंगे, आप कहेंगे कि मैंने एजुकेशन साथ मिलकर काम करना है, मेरी एक्सपर्टीज कंप्यूटिंग में है और मैं देखो हमारे एजुकेशन में जो टीचिंग टेक्नोलॉजी में क्या मैं डेवलपमेंट कर सकता हूँ। आप बेहतर काम कर सकते हो, आप मेडिकल में काम कर सकते हो, आप फिजिक्स में, इंडस्ट्री में, सिमुलेशन में, यानी आप जैसे जैसे अपने फील्ड से बाहर निकलें आप देखेंगे आपके लिए इतना काम है करने के लिए आपको अंदाजा नहीं है। मैं कहता हूँ इट्स जस्ट लाइक अगर आप इवन यू आर जीरो सिफर है ना, अगर आप when you collaborate with someone who is 1 तो आप क्या बन जाते हो? 10 हो जाते हो, यानी आप सिफर हो। मैं नहीं कहता आप सिफर हो, इवन कोई कहता है कि मैं बहुत कमजोर हूँ, मैंने अभी रिसर्च स्टार्ट की, मैं भी काम करना स्टार्ट किया, लेकिन आप सिफर सुनते हो, मैं जीरो स्टार्ट पे हूँ, लेकिन इसके साथ आप काम करते हो 1 है तो बोथ बिकम 10।
अगर 2 से करते हो तो 20 हो जाती है, अगर 90 से करते हो तो आप 90 हो जाती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कॉन्फ्रेंस का कि आप लोगों के साथ मिलें, इंटरेक्ट करें और कहें कि हमने कैसे कोलैबोरेट करना है। मेरी आपसे सभी से यही रिक्वेस्ट है और एडवाइस भी साथ साथ बच्चे आपसे है कि ये कॉन्फ्रेंस में उठना बैठना, लंच किया, एक डिनर किया बड़ा अच्छा सा, उस पर राव साहब को बुला लिया, मुझे बुलाया, मुझे ना बुलाया, ठीक है, और ये नहीं मकसद है। ठीक है, नहीं मैं सॉरी बुलाया था लेकिन नहीं आ सकता, पर वो ये कि उठना बैठना खाना पीना नहीं है, बल्कि ये चीजें आपने सीखनी है कि दुनिया में लोग क्या काम कर रहे हैं, उनसे आपने अपने लिंक डेवलप करने हैं और साथ साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। और कोलैबोरेशन मैं समझता हूँ कि बहुत है, ये लाइफ लाइन है आज की दुनिया की। अगेन एंड पे मैं तमाम डायरेक्टर साहब, डायरेक्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी अब्रार साहब, चेयरपर्सन IAS राम साहब, राम साहब, नाम साहब, डॉक्टर AD, उतार दूं? बहुत ही ऑर्गेनाइज की और मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर फिजिकल कॉन्फ्रेंस होगी। अल्लाह Thank you, sir, for your motivation and valuable comments on this momentous occasion. Now I will request Chair of the Conference, Dr. Hanan bin Yakat, for concluding remarks. Vice Chancellor, Professor Dr. Abrar Hussain, Honorable Chief Guest, Professor Dr. Khalid Mahmood, Vice Chancellor, Punjab University, Director DSNT, Professor Dr. Abrar Hussain, esteemed international and national speakers, distinguished guests, respected chairpersons, and organizing team, valued researchers, and students. Assalamu alaikum. Being chair of conference and coordinator of Information Sciences Department, I am highly delighted and feeling a great pride to share a few trade words for the closing of second international conference on recent advancements in computer science and information technology. It is great privilege for me to extend my deepest gratitude to each of you for making this event prestigious ceremony full of with eagerly learning and exciting accomplishment. At the first place, I would like to express my most appreciation to our all esteemed national and international speakers who proficiently turned my dream into reality and created fruitful opportunity for all deputed researchers and for all the co-researchers. In this conference, the total number of national and international keynote invited guest speakers was 60 from 10 different countries, and total number of registered participants was more than 1,000. Furthermore, we received 200 plus abstracts from different universities, from which we accepted only 60 abstracts for abstract presentation. I am confidently hope to that this conference will us all together to create a margin for meaningful intellectual exchange, and in the same way our unbeatable commitment will provide iconic works in advanced technology and promoting academic excellence. I extended my earnest appreciation to our Vice Chancellor for his commendable vision and committed support to launch and execute these vibrant efforts. I also pay cordial thanks to our Chief Guest, Professor Dr. Khalid Mahmood, whose financial presence extremely added a absolute prestige to this event. I would also like to express my gratitude to the students, faculty, and all other respected audience present here
and all those who joined online this session. Thank you very much for your energetic participation. Last but not least, I pay my special attention to our dedicated team who has worked vigorously to organize and ensure the seamless execution of this conference. I am also thankful and appreciate the valuable contribution of Mr. Abdul Salam, the alumni, and CEO of 9D Technologies, who always showed a keen interest of this ultimate growth of this prestigious department. Furthermore, I am also thankful to all other sponsors like HEC, PHEC, Lahore 24 News, or Cotton, Elizabeth Foundation, and media team